So, good morning. Welcome to this orientation session. Now, as you all might already know, this session is intended to kind of orient you with this optional philosophy, and obviously philosophy as a subject first and philosophy as optional. Now, like, what are the nuances of this subject? Who can take this subject briefly? That also I would like to know, because I'm expecting some people who may not have yet decided as to which optional they will like to go. So there will be some help to them, or maybe some who are thinking and maybe you're not able to yet decide. They also get some ideas to what and how philosophy optional is optional. So first is subject, what philosophy is, what it requires, who can take it and all. Second, optional, what kind of questions come, how in general, broadly, how do we tackle it. And third, what this course is going to be, how it is going to be. Okay, so if you have any doubt in between also you can ask. Okay, so shall we start? Now, first, what is philosophy? So the word philosophy means philo plus sophy. Philo means love. You might have heard the word called like philanthropy, philately, philanthropy. Anthrop means human beings, anthropology. So philanthropy means the one who loves human beings. So philanthropist means जो दान धर्म करता है लोगों के लिए. So philo means love, attraction, or your intention out of that love, intention to put some efforts for. Because if you love means what? You have strong desire for a particular thing, or strong opinion, particular thing, positive opinion, attitude towards particular thing, and certainly it reflects into some action with respect to achieving that, attaining that, whatever. So philo. And sophy means wisdom, knowledge, love. Now you might have heard this word sophisticated or Sophia. Some girls have this name, Sophia. Sophisticated. Now sophisticated means what? Which has a lot of intellectual input, basically complex. Sophisticated means complex. So, or sophisticated means knowledge wise higher. Generally what do we say? बहुत sophisticated है, समझने में time लगता है. Sophisticated technology. So Sophy basically is coming from the word, Sophy means knowledge, wisdom. Your understanding of complexity, that is Sophy. So philosophy means love or wisdom. Now basically, if you see it from very common point of view, someone who is a philosopher means he has strong love for knowledge. So obviously, if you have strong love for knowledge, means there will be continuous quest for knowledge. How do you attain knowledge normally? What is the instrument to attain knowledge? Okay, the basic instrument to attain knowledge is questioning. You question, you get answer, that answer is part of your knowledge. So that is the reason philosopher is the one who always remains with the always in the mood of questioning, critical questioning. Questioning doesn't mean allegation, questioning as to out of curiosity. So curiosity is the inherent feature of a philosopher. If something happens, philosopher will try to know what happened, how. That is a philosopher. But here little catch is, in Western context, generally there are two strands in our syllabus also and otherwise also in the world: Eastern philosophies and Western philosophies. And in the Eastern philosophies also, basically they are Indian philosophies, because when we see Eastern, either it is from India or China or Japan, Korea, like that. So either it is a Buddhist base or a Hindu base or dharmic base. Both are dharmic base, you can use the word, because both use the concept of dharma.
in a different, we'll see what is the meaning of dharma, how it is different from dhamma and all that. Dhamma is Buddhist term. We'll see technicals, we'll see from Monday onwards. So in Western sense, it is more of knowledge. That's why philosophy. In Indian context, Sanskrit basically, what is the word for philosophy? Darshan Shastra. Now here Shastra is some technique, method, logic, but Darshana here word is, Darshana means seeing, direct perception. So in Indian context, it is not just intellectual. In Indian context, it in fact heavily depends upon Darshana. Darshana means perception, means direct experience. Here Darshana word means broadly experience. So you cannot just calculate things in your mind, you experience. That is the reason all the Indian philosophers, okay, the personalities, all the Indian philosophical personalities or philosophers are basically people coming out from spiritual traditions. Whereas in Western, you will see the philosophers that we study, Plato, Aristotle, Descartes, Spinoza, Wittgenstein, Russell, everybody, they are coming from intellectual class, intellectual stream. So we can very fairly say that Indian philosophy is spirituality dominated or spiritually inspired, and Western philosophy is intellectually inspired. And you will see exactly the same thing when you study both the topics, Indian philosophy, Western philosophy. It can be very clearly seen. Like for example, when we say spirituality, what comes to our mind first? Okay, Atma, very good. So Atma is very, very central to Indian philosophy, except Charvak. Charvak is a different thing. But even Buddhism, they have to give some reference to Atma in the form of Alya Vigyan, in the form of stream of consciousness, the consciousness, something they have to use the word Atma. This word Atma, the centrality of word Atma is not the same in the case of Western. Western, the word used is mind. So here the central word in Indian is Atma, central word of Western is mind. This clearly shows the word mind is more intellectual dominated. It will be taking you to the intellectual journey. Atma will take it to the spiritual journey. And why are we only studying Indian and Western? Basically because that is the only part of the syllabus. In our syllabus also, we do not study much, and in the world also. These are the two most considered to be most advanced of the philosophies. So if there are some other stands, they would be still struggling to reach what Indian philosophy and Western philosophy have reached. Yes, sir. Without the Atma, how can you define spirituality? How to define spirituality, or I have to explain spirituality to someone without using the word Atma? Yes. No, it's very difficult. That's the point I'm saying. The Atma, defining spirituality without Atma in philosophy, or at least you need religion, because see, the word soul is there in Western philosophy, but it is more of in Western religion, that is Christianity, not in Western philosophy. The word used in philosophy is mind, and all the more it is applicable for the later philosophers, post-enlightenment philosophers, Kant and others, Descartes and all. Plato, Aristotle, still there is a concept of soul because they are still ancient kind of philosophers. No? So that's the reason. No, they are not. Spirit and Atma, they are not same words, but they are similar or they are translatable in a context. You can say they can be translatable, but as I said, you cannot translate everything that is in Indian philosophy to the Western, because see, you can translate physical things as it is. Okay, like the word arm is called mango because there is a physical thing that is standing in front of you, so you can straight away give two names. But when it comes to abstract concepts like nirvana, moksha, mukti,
See, very loosely they translate into liberation. But nirvana is different and moksha is different. Kaivalya Gyan is different and Viveka Gyan is different. So, because we have done a lot of detailed mastery into it, so we have different words for different things. So many times people ask what spirituality and I have What is the spirituality? So how can you define spirituality in one proper definition? See, Indian context, knowing what exactly the nature of this Atma is spirituality. Or basically, you might have heard this many places, who am I? Answering to this question in a broadest possible sense. Like if you ask me who am I now, I'll say I'm a faculty of philosophy here. If someone else asks me who am I may say I'm from Delhi. If I go outside India, somebody else, who are you? I am Indian. So your identity changes practically. But what is your ultimate identity? Not just human also. Human is also part of it. Beyond human also, Indian philosophy I am talking about. Beyond human also there is identity. And if you reach to that identity, then what happens? Tattvamasi. That you are. Or Aham Brahmasmi. I am Brahm. So you reach that level. Reaching that level is spirituality. Okay. Or other of this thing is any efforts that you do for your inward exploration. Inward exploration is spirituality. Okay. Outward exploration is science. Inward exploration is philosophy. Spirituality. Outward explanation is physics. Inward explanation is metaphysics. You can say that way. Okay. Whatever I am going to talk to you today is very broad conception. Once you go into the one by one subject, you will understand what I am talking about. For now, you just take it as a face value. That's how it is conceived. So, philosophy is something, a philosopher is someone who puts efforts into knowing things, right from the physical things till the inner things. Okay, Atma and everything. Okay. Okay, then why especially in Western context? Because see, the word philosophy is coming from Western context. So the word philosophy, and see, this is the problem, and that we will study linguist and you will understand Wittgenstein. Language also plays a huge role in your philosophy. So the moment we are speaking in English, it is very difficult or it is very limiting to explain Indian philosophy. Because Indian philosophy is Sanskrit or Pali based, it has its own linguistic. So when we say the word philosophy, we speak in English, we will be automatically more inclined towards Western conception of philosophy. But that's how it is because we are studying in English, our medium is English. But we'll still try to understand Indian, it's not a difficulty, people have understood. That's the reason, in the Western context, philosophy is considered as mother of all streams, all sciences. Why? Because science, basically philosophy means someone who questions and puts efforts to get answers. If you are putting questions to get the answer out of external world, you are a scientist. And somebody who puts, like if you are putting your brain into human body, then you are a biologist. If you do the same into the universe or sky or things, astronomy, you will become astronomer. Like that, physics, laws of physics, things, laws of chemistry. So that's the reason everybody, that's the reason if you attain a higher level of knowledge in that particular topic, what do we call yourself? PhD. That is doctorate of philosophy of biology, doctor of philosophy of medicine. Why word philosophy there? Because you have reached that higher grade of questioning and answering of that particular thing. That's why you are called philosopher of that thing. So in Western context, philosopher means somebody who has a strong desire for knowledge, and through question, critical thinking. Philosopher never accepts things. It is believer who accepts things. Philosophers questions things. Okay. In Indian, you might have heard this word, Darshan Shastra, we already discussed, but there are other words, Tattva Jnana, Jnana Shastra, Niti Shastra, Tarka Shastra. Here,
different words. Like Tattva Gyan is metaphysics. Tattva means that thing, that meta thing basically. Okay, or it is also called Parabhautiki. That is also a word used. Para means beyond. Bhautiki is physics. Beyond physics is metaphysics. Jnana Shastra, theory of knowledge. Niti Shastra, theory of morality, or basically ethics. Tarka Shastra, logic, okay, theory of logic. So the same thing is there, similar things are there in Indian also. But broadly, you understood what philosophy as subject is, what is its importance, what is its different branches. We'll see it in the next slide also. Okay. Now, why philosophy? Why everybody is studying philosophy, or why? I'm not talking about optional. I'm talking about philosophy in general. Why? What is the logic behind the philosophy? Now, this is a natural disposition of man to know. It's like this, that if you are human, you have this natural disposition, means inherent nature. You cannot, like natural disposition of dog is to bark. Like that, natural disposition of man is to know. You've seen smaller kids, they are so very much curious about everything. Every small thing they will observe like this. Why? Because they are tuned that way. Maybe evolutionary, whatever reason, that we'll see later, but they are tuned in that way. So, because it's a natural disposition of man, one would automatically be philosopher. So everybody is a philosopher in one way, in one or the other way. Everybody is a scientist in one or the other way. Obviously, if something happens in the house, okay, some leakage happening, you might not have gone to any engineering schools. What do we do? We'll see, यहाँ से बंद करके देखेंगे उधर आ रहा है क्या. You'll apply something. Means you'll try to know things on your own. So you are a scientist in that much this thing context or that much limit. In the same way about philosophy. So everybody that tries to know things, and by the way, whatever said and done, however you can deny yourself, there will be times in your life you will be faced with this question as to why these things are happening. Why it is happening the way it is happening, where it is all going to go to, where these things are leading to. मैं कहाँ जा रहा हूँ, society, humanity, where are we leading to, and why, and from where we have come. ये question सबको आता है, and especially those who have time to think, at least, the students, people like you and me, those who have time and luxury, I would say, to think. The moment you get a chance to think, you will think like a philosopher. Now your limit would be decided on the basis of your experience and your perception, your capacity of perception, your knowledge and other things. But this basic inherent force is there in you, everybody. So why philosophy? Because it is natural disposition. Everybody wants to know. Only thing is how much your stamina, it's something called logical stamina, questioning stamina, critical stamina, whatever, how much critical you want to go. After some time I'm like, yaar chodo itna kaun dekhega. So that is okay, practically convenience, you might have taken that decision, but then that is an indication of lack of or rejection of that human part that you had, reason, critical reasoning. So you are saying, "Are chodo," means what? I don't want to be more human being than I am now. There is this quote: if you deny to think, you are actually denying to be human. Thinking is very core nature of human, and these are the philosophers. And you see all the philosophers that we will study, you will see there is a huge contribution that they have done as a philosopher in all the aspects of both Indian and Western. Their science, their culture, their religion, their ethics. Every philosopher that is the great philosopher of his or her times certainly would have contributed in a big way. Even we study in paper 2, Mahatma Gandhi is one of the philosophers. Why?
Dr. Babasaheb Ambedkar as a philosopher, because they changed the way society. They might have focused on one particular thing, ethics, morality, society, but they are, even all other optionals you might have heard, no, thinkers. What do? Think. Only thing is their area of thinking is limited, that's why they are sociologists, anthropologists, political scientists. Everybody is actually a philosopher. Only thing is because of the practical constraint, perhaps they are focusing on one aspect. Mother of all knowledge, we already saw that. Fundamental questions of life, we already discussed as to why. And it's really a question you might see. I'm not saying every time you would be thinking about it, but for sure there will be times in your life you will be forced to think as to why these things are happening and why it's happening with me only. Many things, many these kind of questions come. And ये कब तक रहेगा? If it is negative, if it is a painful, suffering experience, we will be like, ये कब तक रहेगा? So this question will always remain in your mind, okay? And we'll see when we'll study existentialism. Today, because of some, you might have experienced this also. Today, because of some negative experience, pain, suffering, you might be thinking about life and why and how it is happening. But maybe after some external situation improves, you become little comfortable. You start sourcing some pleasurable experiences, pleasantness, positive experiences or something. Basically, बाहर की चीजें ठीक हो गई. Then you forget that question. Yes, it happens. So we'll study in existentialism what is forgetfulness. This is exactly what they talk when Heidegger talks about existentialism. So forgetfulness is you forget your own basic core things, and you somehow intentionally indulge yourself into the temporary things so that I can forget the basic question. But one thing is very sure, philosopher is someone who will never forget the basic question. There are ways to think, and continuously that question will remain in your mind. It's not that it will bother you, you know how to do the practical things, but ultimate question will always remain. This is exactly how Bhagwan Shri Krishna tells in Gita as to how one should live. Nishkam means even if you are into the world, your basic, back of your mind, you are philosopher questioning yourself or trying to reach to the ultimate. I am doing my job here. That's okay, that's a practical thing. Whatever responsibility for all, practical physical existence of human being. But ultimately, I should be connected to the ultimate. If that is the kind of life you are living, then you are the best way, or you are the example of best way of living life, right? Now, reality versus appearance. This is the very basic question that philosophers. Now, what happens if you see something? When you see something, and after some time, something else comes to you or appears in front of you. For example, when यहाँ पे थोड़ा अंधेरा वगैरह है, if there is some rope, laying down, it's moving a little bit. Suddenly we feel that it is a snake. But when we, put on the lights and go and see it clearly, what happens? We see that it's not a snake, it's a rope. So this is the whole history, or this is the whole story of philosophy. What is the reality and what is the appearance? Everybody is trying to tell you, no, things aise nahi hai, aise hai. I was thinking it is like this, but now it is like this. Okay, like you might have seen, you might have heard about, at least there is this hot springs in Himachal. Now just imagine when first time one human being would have experienced that, be so surprised, what is this? Then somebody would have told you, no, ये नीचे भगवान है, भगवान का कुछ ऐसे. Answer मिल गया, चलो. But philosopher will be thinking, no, if this is the case, और जहाँ भगवान, वहाँ पे भी गर्म पानी आना चाहिए. So, and when the person comes and puts its efforts and whatever speciality, फिर geology वगैरह वो बाद में special हो गया, special knowledge हो गया. What happened? Then we know, no, that was not the reality, that was just appearing to be reality. But now this is the reality कि नीचे वो
जो हमारा कोर ऑफ द अर्थ है उससे कुछ कनेक्शन है, पानी गर्म होकर बाहर आता है. So when, or for example, what is now normally if I ask you what is the shape of the earth? Flat. It's clearly flat. How would you know it is round? Because it was told in the school. But initially in the school also they used to say it is flat. So because somebody later on put efforts in a different way, astronomical way, or now so we can go out and see. So reality was that it is round, appearance was that it is flat. So philosopher is the one who takes the journey from appearance to reality. So there is always a debate between appearance and reality. In normally हम बोलते हैं ना कि reality में ऐसा नहीं है. Means what you are saying, assuming it is an appearance, in reality there is something else. So Indian ho, Western ho, all the philosophers will talk about reality. Everybody will talk about what is real, okay, not what is apparent. So that's why you might see this word again and again, real, reality, ultimate reality. Reality means what? Something that is real. Then analytical ability. So you already know, because unless you have this capacity you cannot think. Logical stamina. Now stamina as in your ability to withstand that logical rigor even if the results for now are not coming. तो आपको उसके बारे में you have to keep thinking about it, that logical stamina. Critical thinking means basically whatever is there, just don't accept it. Be critical in your approach. Okay, समझ में आ रहा है? लगभग everything is similar, only different words to explain the same thing. So critical thinking is that questioning, that way you question things so that some answer will reveal to you something. And the bigger picture. Now once you start understanding things, obviously you would like to understand things in a broader perspective. Philosophy will always, because the more basic you go, more in depth you go, more universal your thinking becomes. So in that way philosopher is someone who will always think about bigger picture or most basic. Like for example, now scientist tells us that everything is made up of atom. Now ultimately when we say everything is made up of atom, you went into a smaller part, you went into deep of something, and then you commented about all the things. So your comment is a universal law. Whichever physical thing, this is about physics basically, whichever is the physical things, everything is made up of atom. So you came up with the universally applicable law. So reality that is applicable to all possible scenarios. That's why it is broadest possible way. Even for that matter, when we question कि ये life है, when we normally say कि भाई आज उठना है, आज ये काम करना है, you are continuously into the day-to-day thing, problem solving, smaller problem solving. But when you think of philosophy, what do you think? The larger perspective. What have been my life, how it is going to be, till what time, what will happen if this happens, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा. So ultimately what happens? Your life becomes something that you can see in one vision. Ultimately, do you not know that there is end to this life? Everybody knows that there is end to this life. Now, is it a pessimistic statement? It is a factual statement. It is like saying that in Antarctica it's so cold that one cannot stay. A human being cannot normally stay there. Is it a pessimistic statement? No, it's a factual statement. Or you cannot just fly like birds. It's a fact or a pessimistic statement? It's a fact. So something which is a fact, if you want to take it as a negative something on yourself, that's your problem then. Or you perhaps lack
that basic approach towards life, and many people have this. So when you see things at very broad perspective, many smaller things actually gets collapsed. Okay, you might have seen this also about ethicality, behavior being ethical. How do one get inspired, or how do we generally inspire others to do ethical things? Because we ask them to think broadly. Don't get into smaller benefits, smaller नफा एंड नुकसान, normally we call it हिंदी की, छोटा छोटा नफा नुकसान की बात नहीं करो. Think broad perspective means what? As broad as you can. Think long term. You might have heard this, think long term. Thinking long term is considered positive or negative? Positive. Everybody, you should think long term. Career may be long term, strategy may be long term, planning may be long term. How much long term? 5 years, 10 years, 50 years. So the more or the longer term you can think, more wise you are considered, more knowledgeable you are considered, that you can think of 10 years. So tell me, why don't you think of 500 years? Now, thinking, some people think, strategists and all, politicians, they think, but they think for country. Individually, would you think of 500 years? No, you will think about 100 years. Now, if anyway the 100th year is going to come, whatever you do now, you might be the king, you might be the most moral, you might be whatever, ultimately things are going to finish. But if you think the larger perspective, especially in Indian philosophy, this law of karma comes into picture. So if you are thinking long term and then suddenly you realize, okay, how can I think beyond 100, 90, 170? Then there is, there comes answer as, yes, you have to, because there is Punarjanma. So why don't you think in that way, right? So that's the reason you see philosophers always talk in these kind of terminologies, long term, Punarjanma, the broad perspective, ethicality, don't get involved into the smaller things, think big and all that. So because these things are very, very important, not just for administrator, wo to hai hi, that we will see how, but also in the context of normal life. We always talk about our grandparents would have done so proudly. We talk about Mahatma, we feel proud about, I am from the country from where Mahatma Gandhi came, Buddha came. Why? Because they have done something great. So the point comes, if they have something great and you are talking about them now, simple question, why don't you also put some efforts and do something that the next generation, and this you hear, it's not very uncommon in India. People say, I don't want to do something that my grandchildren will be not happy about, or not, I would not want to do something that they are not proud about. People, at least in, normal people also in India think like this. They are philosophers in that way. Okay, so philosophy is thinking broad perspective. Indian philosophy is more, as I said, spiritual oriented, and Western philosophy is very intellectually rigorous, that will study, and this you can see while you studying also. बहुत लोगों को ऐसा होता है Western philosophy थोड़ा tough लगता है, वैसे वो tough नहीं है. There are some terminologies that you need to understand initially. Once you understand terminology, it's not very difficult to understand. Okay, who is this person? Adi Shankaracharya. Okay, now what is he saying here? The world, like a dream full of attachments and aversions, seems real until the awakening. वो शंकराचार्य की फिलोसॉफी के समय और देखेंगे हम. But the simple logic is this, that till the time you are asleep, whatever dream that you go through is as real as anything. स्लीप में जो ड्रीम चल रहा है वो तो इतना रियल होता है जैसे चल ही रहा है अभी, इसमें कोई डाउट है. And nobody during that dream
whatever, 5 hours, 2 hours, whatever. Nobody questions that it is a dream because it is so real. Yes, Satyam. Yes, certainly you can choose philosophy as optional in Hindi also. I am pursuing PG. Okay, Hindi literature. Yes, philosophy very much. In fact, Hindi literature walas, half of your Indian philosophy will be like it will help you in Indian philosophy, because I'm sure in Hindi literature there would be some aspects to ancient literature and stuff like that. But yes, you can take. Anybody can take philosophy. That we'll see. And most of the people who are taking philosophy, they are not from BA or MA philosophy. Different backgrounds they are. Many of my students are doctors, engineers, somebody who is BA chemistry, somebody who is MSc biotechnology. Everybody does that. Yes, good morning, Akanksha. So, basically, when you are dreaming, you don't know that I am dreaming. It is as real as anything else. But what happens when you wake up? अरे वो तो सपना था. अच्छा बुरा वो ठीक है. So the moment you are awakened from your dream, you realize it was just a dream, not reality. So Shankaracharya says, what is the guarantee that this is not dream? Means, if you, and how do you know that? As long as you are in this stage, you will not know it unless you rise above it, awaken above it. You will not understand. Yes, namaste Shweta. You cannot understand. So that's why the word awakened. Awakened means woken up from this dream or sleep and risen to the different level. That's why Shankaracharya gives 3 levels of stages, consciousness. There are basically 4 levels. Turiya is also another stage, but basically three levels that he talks about for our understanding: dream stage, waking stage, and Paramarthik, that is transcendental stage. And it is possible, and we know in India we have seen so many spiritual people, so many realized beings or awakened beings. So now you understood, like Shankaracharya, why I took is because Shankaracharya is considered to be the most methodological, systematic of all Indian philosophers. Okay, even our first what I forgot the name, Sarvepalli Radhakrishnan, second president, I think. Sarvepalli Radhakrishnan, he was a philosopher. He wrote many books on Upanishads and other things. There he actually said that all the Indian subsequent philosophers of after Shankaracharya, whatever they wrote is nothing but just a footnote to what Shankaracharya wrote. So Shankaracharya's Advaita philosophy, non-dualism or monism philosophy, is considered to be the, and it's the best gift from India to the world. We'll study it, how and how, why. It is very, very, very interesting. Okay. आकांक्षा डेली तो नहीं, शुरुआत में 1-2-3 क्लासेस यूट्यूब पे लाइव होंगे. ये कोर्स का पार्ट है जो अदरवाइज ऑफलाइन होता है. ठीक है, लाइव मतलब ऑनलाइन होता है लेकिन लाइव फ्री एंड ओपन नहीं होता है यूट्यूब पे. ठीक है, लेट्स go to the next. Now, as I said, from Western point of view, all other aspects of science now got separated. Everything falls under philosophy, but now they are separated. What remains with philosophy is now this much: epistemology, metaphysics, logic, ethics and aesthetics, of which aesthetic हमारे syllabus में नहीं है. Ethics as such नहीं है, paper 4 में थोड़ा बहुत, but nothing technical there. These two are the philosophy. Now I would like to bring you to the our optional understanding
for the sake of paper. Philosophy we are discussing as a broad stream. Philosophy अपने आप में क्या है? This I am talking about philosophy as optional. Only these two things are part of the syllabus. Little bit this, very few places. So when we say philosophy of Kant, philosophy of Shankaracharya, philosophy of Buddha, philosophy of Plato, Aristotle, Descartes, what are we talking about basically? Epistemology of Descartes, metaphysics of Descartes. Epistemology of Kant, metaphysics of Kant. Epistemology of Shankaracharya, metaphysics of Shankaracharya. And between the two also, metaphysics is the most important because it talks about theory of reality. Okay, what is epistemology? Theory of knowledge. Now, philosophers can go to to whatever extent they can go. Like there have been serious academic papers, still they are coming on theory of meaning. What do you understand by this word theory of meaning? बताओ क्या समझ में क्या आ रहा है? No, I am not talking about knowing. There is no word knowing used. Theory of meaning. And by the way, we have this theory of meaning in our syllabus. Wittgenstein, early Wittgenstein comes up with picture theory of meaning. Logical positivists come with verification theory of meaning. What is the theory of meaning? Now, meaning of whom? Tell me. What would be meaning of? Yes, Akanksha, you can call to our administrative office, or at the end of this session I will give my mobile number also. You can talk directly contact me also. LevelUp IAAS, if you can search, you will get the number and they will certainly help you because there are people for that, they can help you. So what I was talking about, yes, meaning kiska meaning? In philosophy, meaning of what they would be discussing? Yes, hello Pinky. Meaning of words. Meaning words का ही होगा, because ultimately it's all about words. So there is this question, what is the meaning of meaning? इस पे भी बहुत काम हुआ है, हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्शन बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी क्लैरिफाइड. व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू से मीनिंग? Okay, we normally use meaning means, you know, in a Kohli means winning, ऐसा एक वर्ड होता है मीनिंग. और स्वीट मीन्स डायबिटीज, वहां पे मीनिंग का अर्थ अलग है. द वर्ड मीनिंग इटसेल्फ इज यूज्ड इन ए डिफरेंट मीनिंग. तो बट एनीवे वो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स, इतना थ्रेडबेयर एनालिसिस नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्लिम्स. एक स्टेटमेंट है वेरी फेमस दैट लॉक gives, John Locke, and that becomes his epistemological this thing. I'm just giving you a statement, the glimpse of what it is. He says, I want to know the process when, I want to know the process through which when they go, they call knowing. Knowing. I want to know the process when they go through to which they call knowing. Basically, process of knowing, जिसको वो लोग knowing बोले, I know this, I know that. What do you mean? What do they mean by this know? K-N-O-W, know. I want to know. Means he is saying, I want to explain my theory of knowledge, theory of knowing, epistemology. Understood? And why? Because when I say I know that there is chair. Now if I tell you, when you came from just came from outside, you say, sir, it's raining outside. How do I know? I can go, I can just believe on your words, or I can go. So both can be process of knowing for me. If I see myself, we call it perception. If I believe your word,
it is testimony or shabda. If I hear or after the class when I go and when see muddy roads, I like, हाँ सही बोल रहा था. Inference. These are the ways you know the things, and there are limited ways to know things. You will be surprised to know, okay, it's like analysis of something that we take very granted. You see something and know it, perception. When you infer something and know it, it is inference. When you believe in the words of some credible this thing, आइंस्टाइन ने बोल दिया कि भाई प्लेटो के बाद नेपच्यून नहीं है तो नहीं है, हमने थोड़ी देखा है. देयर आर नॉट 9 ग्रहस बट ओनली 8 ग्रहस. ओके ठीक है, बिकॉज दे आर अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर. यू नो, मोदी जी ने बोल दिया कि आज शाम से नोट बंद, तो बंद, उसमें जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अथॉरिटी ने बोल दिया. सो शब्द प्रमाण, तो वो देखेंगे हम डिफरेंट प्रमाणस. इंडिया में इट इज कॉल्ड प्रमाणस, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स थियरी ऑफ नॉलेज. ओके, what is your theory of knowledge? And this theory of knowledge means what is your methodology of knowing anything? As I said, perception is the methodology, seeing, tasting, touching, hearing, or inference is the methodology. So that becomes your epistemology in a way. But now tell me, whatever process of knowing, right, whatever process of knowing that you go through, knowing what? No, that is meaning. Knowing what? Reality. Very good. What is real and what is not real? Okay. Online folks, you can also answer in between. Okay. So, theory of knowing. Theory of knowledge is epistemology. But then, on the basis of what all and how can you know about the thing, the reality? It is called theory of reality. Means metaphysics. So now you understood what epistemology is and what metaphysics is. Okay, epistemology is theory of knowledge. What is your process of knowledge? What is your theory of knowledge? How do you justify your process of knowing? Is perception process जो आंखों से दिखता है सही है, क्यों सही है, क्या है, ये सब perception. Why inference is true, right? Or what all can be known, what all cannot be known, what happens exactly in the process of knowing. नोइंग में मतलब क्या होता है, बाहर से लाइट आएगा, अंदर जाएगा, अंदर से कैसे होगा. नॉट इनटू बायोलॉजी, वो रेटिना उसमें नहीं जाएंगे हम, बट उसका एक प्रोसेस. देन थियरी ऑफ रियलिटी मींस थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ नॉलेज व्हाट आर यू नोइंग. बाहर बारिश हो रही या नहीं हो रही, रियलिटी के बारे में जानना इज थियरी ऑफ, बट इट इज एक्चुअली थियरी ऑफ रियलिटी. मींस what is the nature of reality. Now here it's not physical reality, because if it is physical reality it becomes physics. Okay, chair blue है, ये physical एक statement है, but chair क्या है, chairness से बनी है, chairness क्या है, universals क्या है. I'm just giving glimpses, no need to take burden of it, just listen. So this particular thing is called theory of reality. फॉर एग्जाम्पल, कोई रिलीजियस पर्सन बोलेगा जो भी है भगवान है, बाकी सब तो ऐसे ही है. थियरी ऑफ रियलिटी, देयर थियरी ऑफ रियलिटी, जिसको वो रिलीजन. कोई बोलेगा ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, शंकराचार्य मेटाफिजिक्स है वो. somebody says everything is made up of परमाणुस, वैशेषिका फिलोसॉफी. okay, somebody says that there is only one reality, that is substance. That is called Spinoza's metaphysics. So when they comment about the reality, the nature of the reality, it is their theory of reality, that is metaphysics. And when they explain through what all process you know these things, theory of knowledge. So, and यही दो पार्ट सिलेबस में है. Okay, this is the starting point for you to understand why people say philosophy optional is a very limited. As far as our syllabus is concerned, very limited, because there are only you can just draw one big chart, you can draw whole syllabus, 3 diagrams, that much is the syllabus. Only thing is it takes a lot of time initially to understand. If you are interested, you will understand very easily, because you have to listen to it properly, and if you have proper orientation, एक understanding अगर ठीक से करवाया गया आपका, then you will understand. Otherwise
बहुत देखा है मैंने, जो स्टूडेंट्स बाद में आते हैं टेस्ट सीरीज के लिए वगैरह, दे हैव a lot of problem in their basic understanding only. Okay, but that will not happen if you go through my class, because my basis is, or my whole focus is to explain you what it is. Notes वोट्स तो है ही, obviously उसका practice होता ही. Logic. Now, logic is basically about forming meaningful statements. See, if I go out, I see it's raining. So, the epistemological methodology I used is perception, right? And I commented about physical reality. I'm not talking about metaphysics, but it's raining, right? Now, how would I write? It's raining outside. Can I write outside raining it's? So, it's not just syntax. English syntax is different, but whatever I say has to have a logical form. So, when propositions, when you utter statements, it has to be logical. You're getting my point? You cannot say that it's cold because it is fire. वो लॉजिकल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा. सो वॉट एवर यू से, इट हैज टू बी लॉजिकली सस्टेन्ड. सो लॉजिक कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू एक्सप्रेस योर फिलोसफी. कुछ भी नहीं बोल सकते, इलॉजिकल चीजें नहीं बोल सकते फिलोसफी में. यस, logic is, see, there is this concept called reason. So not non-contradiction to your own reason is being logical. Simple, like if I say, you know what is illogical and what is logical. If I say 2 plus 2 is equal to 5, logical or illogical? Illogical. Why? Because it is counter to your reason. Now reason is the basis. You will see what is the centrality of the reason. If I say 2 plus 2 is equal to 4, logical. Okay, there are laws of logic, you know, laws of non-contradiction. Means x cannot be equal to not x. ये लॉजिकल लॉ है. x x के ही बराबर होगा, नॉट x के बराबर कैसे होगा, राइट? और कोई चीज अगर x है तो वो y नहीं होगी, y है तो x नहीं होगी. ये सिंपल लॉजिक है. You cannot say that he is very clever, he is very intelligent, that's why he failed. Now tell me, what's the problem with this statement? It is illogical statement. There is some problem in the statement. Why you are feeling that problem? Because your reason is applied. Okay, so logic come into picture when it, why logic is required? Because whatever you say, because there were many complex philosophies came, people started giving statements one after the other, this, that, you know, this is omnipotent, omniscient, whatever. Everything need to be logic. Now factually checked or not, that's another story. If I say I had 2 apples in my pocket, now it is not illogical statement, it can be incorrect statement. I mean, it can be factually incorrect statement कि सच में नहीं है भी, हो भी सकते हैं, तो वो वेरिफिकेशन की, वैलिडेशन की बात होगी. If I tell you now it's raining outside, so you will not say it is illogical. You say it might be factual, not factual. जाके चेक करना पड़ेगा. लॉजिकल में प्रॉब्लम नहीं है. But if I say now it's raining outside, but the point is water is not flowing down, it is going up, it will be like no, it's illogical, possible ही नहीं है. ठीक है. So logic is something, there are some rules of logic, बहुत डिटेल में हमें नहीं है, but there are some basic rules of logic. Law of non-contradiction is the most basic, that yes, when you say x, then you cannot say it is equal to not x, और contrary to x नहीं हो सकता. Contradiction बिल्कुल possible नहीं. Ethics as such तो syllabus में नहीं है, इंडियन में थोड़ा बहुत है. What one should be doing, like this. Ethics मतलब बुद्धा's eightfold path, पतंजलि's अष्टांग योग, चार्वाका's perception of ethics, hedonism, जो चाहिए वो करो, you know.
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ब्याज लोन लो पैसे और घी खाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एंड ऑल दैट मटेरियलिस्टिक फिलोसफी। एस्थेटिक्स तो हमारे सिलेबस पे पार्ट नहीं है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी? एस्थेटिक्स मींस ब्यूटी का क्या मेजरमेंट है, ब्यूटी का कुछ एक स्पेसिफिक थियरी हो सकता है, तो वो एस्थेटिक्स में डिसाइड हुआ, जो हमारे इसमें नहीं है। हाँ, व्हाट आर दी, देयर इज अ प्रॉपर थियरी ऑफ ब्यूटी, लाइक फॉर एग्जांपल दिस रेशियो ऑफ 5:3:2 इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल। सिमेट्री इज द बेसिस फॉर द ब्यूटी, ऐसे माना जाता है कि जैसे ऐसे ये मेरा नाक है, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो वो ब्यूटीफुल में नहीं आएगा, इट विल लूज इट्स ब्यूटी। तो सिमेट्री इज ऑलवेज कंसिडर्ड ब्यूटी। ये देर आर बहुत थे, हमारे कोई सिलेबस में इतना भी नहीं है। सो जस्ट देर इज वन मोर थिंग रिसेंटली यू कैन से लेटर ऑन एडेड कॉल्ड एक्जियोलॉजी, वो भी फिलोसॉफी का ही पार्ट माना जाता है, एक्जियोलॉजी। एट ऑल नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। थियरी ऑफ ब्यूटी, जैसे थियरी ऑफ रियलिटी, थियरी ऑफ नॉलेज, दिस इज लॉज ऑफ फिलोसॉफिकल प्रोसेस और लॉज ऑफ लॉजिक। लॉजिक तो अपने आप में एक लॉ है। एस्थेटिक्स थियरी ऑफ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एस्थेटिक्स। एंड एक्सियोलॉजी भी है, थियरी ऑफ वर्च्यू, पर वो भी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में बस बेसिकली ये दो ही है, इसका भी आप भूल जाओ, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज मेटाफिजिक्स? So how would you know what is your explanation for the process of knowledge and what you know about, that is reality. ये तो सिंपल बात है। See, any process of knowledge would require three things. Yes, कौन सी three things? See, in philosophy, always go as basic as possible. Without these three things, agents, points, the process of knowledge cannot be complete. The core of process of knowledge stands on these three pillars, these three actors, these three things: the knower, the known, and the knowledge. Means, for example, you, the tree, and the light coming from tree to you, or knowing, process of knowing that is happening in you. So without knower and without known, okay, knower, known and knowledge, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है प्रॉपर, एक दो तीन जगह तो वो सीधा एज इट इज आता है, नोअर, नोन एंड नॉलेज, राइट। जैसे उदाहरण, राइट, कैन देयर बी नॉलेज विदाउट नोअर, कैन देयर बी नॉलेज विदाउट नोन? So in normal language you might have heard this, you might have heard this statement, this, what is this? Known, this is knower, and this is knowledge. This indicates a process, right? So normally we also use the words object and subject, ये हमेशा याद रखना। In philosophy this is used Indian, Western both, this is used almost in every place, subject and object. Now you might have heard this term subjective and objective, सुना होगा, objective test. Why objective? Now here the word objective means based on object itself. सब्जेक्ट अपना इंटरप्रिटेशन नहीं डालेगा। जैसे if this person has got jaundice,
jaundice, pelia. So what will happen? This tree, whatever, just imagine some whitish color it is actually, for example, this tree is actually white. How would he see it? Yellow. Yes or no? So this yellow is not an objective knowledge. You are bringing in your own something into it. Objectively it is white. So here anything objective means based purely on object, no intervention by subject. And subjective means intervention by subject, or basically depend upon subject, not on object. That's why we in ethics also we say no, objectivity means your prejudice, your preconceived notion should not come into it. You should see it things as it is. That's why objective. ठीक, समझ में आया? So just the point that we talked about, this triad is always there: knowledge, knowing, and knower, known, and knowledge. Sorry. Now, why philosophy as optional? Now, you might have heard many things. We'll try to briefly discuss those things again, as to just to brush up things to ourselves. It is interesting because it talks about so many things that are not far away things. They are very closer to your own life and things. Certainly, there will be some things that you talk about somebody else's philosophy. Basically, we'll talk about the established philosophers only, but we'll try to understand through their chashma, through their lenses, the world, because it is considered that their understanding, their explanation is the best available in the thing. One, it is interesting. Why it is interesting? Because it talks about human life, human problems, God, religion and stuff. Second, shortest syllabus. We'll see in what way it is shortest syllabus. And you should certainly go, at least if you take out some time and compare it with any other syllabus that you know around, your roommates and all, and please check the syllabus that they have, the syllabus we have. Less uncertainty. Why? Because it becomes, if you are thorough, you can, so many questions get repeated. We'll see, because I have made some indicative list as to how many questions got repeated when, how many times. So literally question gets repeated. Can you even imagine in UPSC you already know the question? Means, so that itself is a big advantage, but only problem is you have to put efforts to reach that level where you understand that, and that is not difficult, but we have to do that. So, and results are also consistent. Okay, is it assist in GS 1, 2, 3, you know that, that also will explain, and helps in building logical and analytical approach and critical thinking, that you know, because after studying 3, 4, 5 months, automatically you start thinking that way. One thing is very sure, I can tell you, the moment you enter philosophy class, that time if you compare it with the last class, you will no more be same person when it comes to thinking, when it comes to your information, when it comes to your understanding, when it comes to your nature and ability of thinking. You will not be the same person at all again. You will be a different person. Okay, so you can clearly feel, not just in the UPSC context, your way of knowing things, your way of writing things. Only thing is you have to put serious efforts into reaching that level. Yes, लेते हैं आकांक्षा, ऐसे के भी लेते हैं क्लासेस, मैं ही लेता हूँ along with other faculty that we have. करण सर, पिछले 2 बैच हमने लिए थे यहाँ पे ऐसे. Interesting क्यों? Most of the thing we already discussed, but briefly I'd like to just tell you why of everything. Now, why of everything is the perhaps only instrument available to know things. कोई भी चीज का क्यों, कैसे, existence, reality क्या है, existence क्या है. Then
ultimate reality, that is quest to know the basic principle, हमने पहले ही बात किया, right? Source of morality. Now why one should be ethical, as to why are we have to be ethical, what happens if you are not ethical, what's the problem? Forget about the punishment that or crime, legal punishment or otherwise, but otherwise what's wrong in it? ये सब भी ethics में discuss होता है, यहाँ पे थे हमारे philosophy में detail, there is nothing much about ethics, but you will automatically start knowing why one has to be ethical. They say God, Brahm, Ishwar, Dev. What is the difference between the God? God का मतलब Brahm, Ishwar, सब एक ही है, भगवान. No, they are not same. You will understand why Brahm is different, God is different, very very different. Ishwar is different, Deva is different, Devata is different, Bhagwan is different, very very different meaning it has. But that is only when if you know understand it, and different philosopher comes up with a different connotation. Okay. That's why in India there is no concept of God, you know this. In Indian culture there is no God per se. The God, ऐसा कुछ नहीं है. There is no one person sitting and changing everything. No. There is Trinity. Religion also there is Trinity. Brahma, Vishnu, Mahesh, Trinity. And Brahm is different, Brahma is different. Okay. Brahm is different, Brahmin is different. ब्राह्मण तो सोशल कैटेगराइजेशन है. ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी जो शंकराचार्य, देखेंगे हम. पॉइंट इज इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. ईश्वर अलग है. ओके. लाइफ, बॉडी, इवोल्यूशन, मैटर, एनर्जी, लाइक दिस ऑल्सो, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड स्पिरिट, materialism, spirituality. You will understand the basic meaning behind that word, from where this word is coming. The moment you know from where the word is coming, automatically what happens? You start understanding different connotation. Now you need to understand one thing as a thumb rule, that always pay attention to the word and from where that word is coming, from where, what context this philosopher is saying that. Transcendental, what does that mean? Beyond space and time in general, but yes, transcendental. What is the meaning of the word real? What is the meaning of the word rational? What is the meaning of the word subject, substance, object? There is some list of some 50 to 60 words. No need to make a list and understand. Just keep keen eye on these words. Once you understand these words, the whole philosophy is yours. Somebody says any other statement, you will understand what the person is trying to say. That's how philosophy works, right? What's the difference between thinking and knowing? And this is again part of syllabus. In Kant, we discuss about this. When we discuss Kant, we discuss what is thinking, what is knowing. What is the difference between the two? Subject-object knowledge, we already seen. Or most fundamental thoughts like idea. What is the meaning of the word idea? Now you will be like, sir, idea का क्या meaning होता है? Idea होता है? No. Every thinker has its specific connotation of the word idea. Obviously, it is something related to here. But what does that mean? What is its status? Is it real, or it just a flash that comes and goes? Or it is something that some engraving on the brain? क्या है? ठीक है? Mind. What is concept of mind? What is the concept mean? Concept of concept. The word concept का क्या मतलब है? चित्त क्या है? मनस, बुद्धि, सेल्फ, आत्मा, ऐसे बहुत सारे हैं. These words, if you understand from different, actually philosophy, we study the philosophy optional nothing but understanding these words, right? Different religions, like how the God of Christianity is different than Brahma of Shankara. Yes, बकायदा question आया हुआ है. Their pattern of theology. Why some particular religion thinks in this particular way? Why particular religion have a strong moral code? Are the same, all religions same in the world? What is the difference between different religion in the world? ये सब चीज किस में आता है? Different interpretation, different orientations of the words. Justice, equality, liberty, sovereignty, ये social political में आता है. What is justice? What is liberty? What is equality? Why I am saying it is interesting? Because everything that is there, that is generally we use it like that. Secularism.
Is secularism धर्मनिरपेक्षता? It is not. We use it, but it is not, because the word dharma is different. यतो धर्म स्ततो जया, पार्लियामेंट के हमारे इस पे लिखा है. क्यों लिखा है? अगर हम धर्मनिरपेक्ष है तो वो क्यों लिखा है? सो वी आर नॉट धर्मनिरपेक्ष कंट्री, वी आर संप्रदाय निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष. Because dharma doesn't mean one particular sect. Dharma means duty, law, ethics. What is due, what is right, वो धर्म में आता है. ठीक. Then comes gender and caste discrimination. उसका भी सिलेबस का ही पार्ट है सीधा. And there are some the philosophical understanding as to why there is gender discrimination, what happens to make person to go for gender discrimination, what is discrimination, what are the different ways of discrimination. मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म क्या है, उसके बेसिक्स क्या है. ह्यूमैनिज्म क्या है, जैसे हाउ एंड इट्स व्हाई ह्यूमैनिज्म इज डिस्कस सो मच, what connection it has with enlightenment. There was a question also on this, how enlightenment era impacted the concept of humanism, the evolution of humanism, right? Theocentric, anthropocentric. Theocentric means, theo means God, anthropo means, so how everything from God centric to become human centric. So if you see it from a, because initially at least, see there are 2-3 stages of UPSC preparation for any optional, especially philosophy optional. First is you should be able to understand things, relate those things to your things around, try to connect things with your own thing, things that you are living, things that you are seeing, you should be able to link it. Especially paper 2 is very much linkable. All the aspects that we talk about, we discuss in polity. Constitutional morality. What is constitutional morality? Ethics में भी आता है, इसमें 2 बार सवाल आ चुका है. So constitutional morality का context आपको philosophical understanding of constitutionalism से मिलेगा कि constitutionalism अपने आप में क्या है. And if you start the journey in a right spirit, it is very, very interesting to know these things. Like crime and punishment, as to why one has to give punishment. Punishment किस basis पे decide की जाती है? If you do murder, there will be, you will be hanged, for example. If you steal, there will be 2 years jail, 5 years jail. On what basis it is decided? What is the basis of punishment? What is the definition of crime? Why the crime happens? हर एक का philosophical understanding मिलेगा. Brief, and this I am talking about understanding level. Second level is you have to revise, because once you understand, only understanding is not enough. You have to reproduce it. You have to remember and reproduce it. उसके लिए revision है. And remember and reproduce not just in the form of notes, but in the form of answer. So आपने समझा भी है, आपको याद भी है, लेकिन इस आंसर के लिए कितना और क्या लिखना है, इसलिए आंसर राइटिंग. ठीक है. बट I can tell you, especially in philosophy, but also applicable to all other optionals and any subject that you study, try to understand what is happening. Understanding is very, very important. And the moment you understand, you go back and revise. Revise means try to remember basically. Whatever your understanding is, try to remember. Like if is there any diagram, try to redraw it again and again. If there is a very basic quote, try to rewrite it. Some terms, try to connect it with others. हो गया रिवीजन. एंड देन आंसर राइटिंग हो गया. इफ यू डू इट, बट यू हैव टू डू इट फॉर ईच एंड एवरी थिंकर. ओके. शॉर्टेस्ट सिलेबस. व्हाई डू आई से शॉर्टेस्ट सिलेबस? बिकॉज 100 से कम लेक्चर में पूरा फिलोसॉफी हो जाता है. some like I have taken 4 batches till now. एक में 89 लेक्चर में खत्म हो गया, एक में 92 में. वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स. कोई लेक्चर लंबा हो जाता है, कोई छोटा. 100 के ऊपर कोई नहीं गया.
आई कीप 100 बिकॉज समटाइम्स आई एक्सपेक्ट दैट पीपल वांट मोर एक्सप्लेनेशन, तो एक आध दो लेक्चर बढ़ जाता है. Shortest notes, now shortest note means literally you can hold whole philosophy. It's like this: one thinker, one page. You can actually reach that level. And once just imagine one thinker, one page, and everything there in the head. That's all. Revision is like you can revise the whole paper 1 in 10 minutes. You will be like 10 minutes? Yes, 10 minutes. But for that you have to, you should have had read it 10-15 times before, which is your work. Full time करने आए तो वही तो कर रहे हैं. Nothing from current affairs is to be remembered as such. जैसे हम नोट्स करंट अफेयर्स के बनाते हैं ना, ये लिखना है लिखना है. नो नीड टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक. वॉट एवर यू आर डूइंग इन GS2 GS3 वही यहाँ पे थोड़ा बहुत पेपर 2 में काम आता है. एंड वो इट विल बी नॉट वेरी स्पेसिफिक नॉलेज दैट यू शुड बी हैविंग, स्पेसिफिक facts you should be having. Whatever in general incidents is happening, which would anyway you will be knowing because you are studying your GS 1 to 3, right? So current से connection zero है. पेपर 1 में तो एब्सोल्यूट जीरो है. इनफैक्ट लिखना ही नहीं है, गलती से भी नहीं लिखना है. जो लिखा है बुक में नोट्स में वही लिखना है. बस उसका रिओरिएंटेशन होता है. कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं इधर का इधर, विद इन दैट सर्कल ओनली, उसके बाहर नहीं जाता. ये किसी और ऑप्शनल, लिटरेचर ऑप्शनल के लिए हो सकता है, अदरवाइज किसी और ऑप्शनल के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है. वो कनेक्ट करना ही पड़ता है बाहर से. ठीक. एवरी फिलोसोफर, इफ वी सी फॉर एग्जांपल प्लेटो के इतने पॉइंट्स हैं, हमारे सिलेबस के लिए इतना ही है. प्लेटो ने इतनी किताबें लिखी, शंकराचार्य का इतना पूरा फिलोसॉफी है, हमारे सिलेबस में 3-4 पॉइंट ही है. बिकॉज the logic of UPSC behind this is, if you can understand these basic 4-5 things, no need to again check whether you understand all philosophy, because they are not asking you to be philosophers in the academic sense. They are asking you to be philosopher in a its spirit sense. If you can understand things, if you can able to think intellectually, if you have a logical rigor, intellectual stamina, you will be able to do it, right? Then socio-political, residual knowledge of policy, polity and society comes handy. वो तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीजें, वैसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रीएम्बल जब भी, there will be some questions where you will require to write preamble of India, half of it, or mentions of preamble, justice, liberty and all those things. Anyway, you know it. So see, paper 2, like for example, philosophy of religion, you know the sections, no? Indian philosophy, Western philosophy, socio-political philosophy and philosophy of religion. Paper 2, section 2, that is philosophy of religion. That philosophy of religion, half of it is nothing but paper 1 only. So half of this philosophy of religion is covered in paper 1. Again, you will be surprised, in the same exam, same question got repeated, morning paper 1 and afternoon paper 2. Can you imagine the same question? Only thing is connotation slightly different. Spinoza's substance and here Spinoza's God. It is same. Spinoza's actually substance is Spinoza's God. थोड़ा wording इधर उधर कर दिया, वही question आ गया. Okay. So as I said, it's very, like for example, Plato, only theory of ideas is the syllabus. His theory of ideas, nothing else is part. His Republic, his Philosopher King, it's absolutely not a part of syllabus. तो उस पे सवाल कभी नहीं आता. Only theory of ideas, theory of forms, whatever. चारवाक, epistemology and metaphysics, very basic. चारवाक का और भी बहुत philosophers है, उसका ethics भी है बहुत ज्यादा, हमारे सिलेबस में नहीं. जैसे मीमांसा है, only theory of knowledge of मीमांसा, और सिलेबस में उतना ही है, सवाल उतने भी आते हैं. मीमांसा का और कुछ भी they don't ask. अदरवाइज मीमांसा अपने आप में बहुत बड़ा स्कूल है, पूर्व मीमांसा. क्वाइन, जैसे क्वाइन एंड स्ट्रॉसन है, क्वाइन में क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म, इतना ही उसका क्रिटिक ही सिलेबस में है, क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म. और क्वाइन के, अगेन क्वाइन हैज रिटन 10 बुक्स, हमारे सिलेबस में पूरा क्वाइन नहीं है. स्ट्रॉसन, हिज कंसेप्ट ऑफ थियरी ऑफ पर्सन, हिज कंसेप्ट ऑफ थियरी ऑफ पर्सन इज द ओनली पार्ट ऑफ द सिलेबस. एक ही लाइन है उधर, सिलेबस आप जाके देखेंगे आपको मिलेगा क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म क्वाइन के क्वाइन का,
एंड थियरी ऑफ पर्सन एंड बेसिक पर्टिकुलर, वो पर्सन का ही पार्ट है, स्ट्रॉसन. सो in real sense it is a very short syllabus. So you might ask इतना short है तो फिर कैसे? Because it needs understanding, you know, चीजें छोटा है, it's a small but it is very heavy unless you understand it. You may not be required to cover like GS all the things in the world, this much only. जैसे मैथ्स है ऑप्शनल, लिमिटेड है अपना, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं है. फिलोसॉफी का भी वैसे ही है, स्पेशली पेपर 1 का, पेपर 2 में भी ज्यादा नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग एटलीस्ट परफेक्टली, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड रेस्ट. More than 25 every year there are at least 25 to 30% questions same as it was before. पिछले 2-3-4 साल के क्वेश्चन फिर आ जाते हैं. देखो ये तो बहुत, this is like a very few of what I could, I was thinking of bringing in all but I thought बहुत लंबा हो जाएगा. Just to give you glimpse as to repeat मतलब कैसे सर बोल रहे हो सर, यूपीएससी में रिपीट कैसे हो सकता है? प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? कंटिन्यूस ईयर भी 2022, 21, 16, 15, 13, 12 और मैंने 12, 11 तक ही कवर किया, उसके पीछे मैंने गया. 11 के बाद पूरा चेंज हुआ था थोड़ा सिलेबस और फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो मैंने उसके जनरली उसके पहले जाने की जरूरत भी नहीं है, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. पीवाई क्यूज भी 11 के बाद बहुत हो गया. जब भी आप पीवाई क्यूज की बात करेंगे ना, जब भी आप लेटर ऑन व्हेनेवर आई विल से पीवाई क्यूज फिलोसॉफी में 11 तक जाना, उसके पीछे नहीं जाना है. ठीक, जैसे Hume's views on causation 2023, 21, 19, 16, 14. How many times is getting repeated? Same question. I mean, this is the same topic. जिसका मटेरियल सेम ही है, सेम ही चीज लिखना है, बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. लाइक व्हाट आर द व्यूज ऑफ ह्यूम ऑन कॉजेशन. दूसरे साल आएगा व्हाट आर द व्यूज ऑफ ह्यूम ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज नथिंग बट कॉजेशन ओनली. ठीक है, जैसे बहुत सारे अरिस्टोटल एक्चुअलिटी पोटेंशियली कितनी बार हुआ है. जैसे देखो इंडिविजुअल राइट्स, ये कितनी बार रिपीट हुआ है? एवरी ईयर 23, 22, 20, एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन ऑन. सो you can actually predict 30% of the question paper. See, religion without God and religion without morality तो हर साल आया है. Because पता है सिलेबस का पॉइंट क्या है? हेडिंग ऑफ द सिलेबस रिलीजन विदाउट गॉड, दूसरा हेडिंग ऑफ द सिलेबस रिलीजन विदाउट मोरालिटी. इसके अंदर कुछ मसाला नहीं, ओनली रिलीजन. तो उस पर सवाल आना ही है. एंड उसमें सिलेबस में कुछ रिलीजन विदाउट गॉड मीन्स दे विल जस्ट टॉक अबाउट टू थिंग्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड एथिस्ट. Buddhism because there is no God but there is a religion. Jain there is no God but that is a religion. And atheism as a religion. इसके अलावा पॉइंट ही नहीं है. Every year they have to give one question. Every year, like they अलग अलग टॉपिक है, दोनों मिलके एक साल ये आएगा, एक साल ये आएगा. See, you need to understand. You need to try to go for low hanging fruits. Smartly play करना है. ऑब्वियसली बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन में आपको करना है, बट उसके बाद जब आंसर राइटिंग करेंगे, जो बेसिक पेपर 2 में, पेपर 2 तो बहुत रिपीट होता है. जैसे ही देखा होगा आपने, जैसे जॉन रॉल्स का जस्टिस, जॉन रॉल्स नाम सुना होगा, उसका जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, क्लासिक माना है. 2023, 21, 19, 16, 13 और एथिक्स में भी सेम क्वेश्चन आ गया. जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंडियन कंटेक्स्ट, ऐसा आ गया, एथिक्स में आ गया. एंड ऐसे तो बहुत सारे एथिक्स में रिपीट होते हैं, आगे भी बताऊंगा मैं, जो कोर्ट्स के फॉर्म में आते हैं. रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, ऐसे में आ गया. ये तो हीगल का हमारा स्टेप, इट्स अ क्लासिक क्वेश्चन ऑन हीगल इन पेपर 1. रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, राइट. ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव दैट आई टू गो फॉर इट. उस तरीके से सोचना है, थोड़ा सा एफर्ट शुरुआत में डालने पड़ेंगे. इट हैज टू बी विथ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट. जैसे दिस एग्जांपल रिपीटेड एज इट इज. देखो, क्रिटिकली एग्जामाइन ह्यूम्स व्यूज ऑन रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट 16 में. 14 में इवेल्युएट क्रिटिकली ह्यूम्स क्रिटिसिज्म थ्योरी ऑफ कॉजेशन. सेम
because his views on cause and effect is nothing but he criticized cause and effect. What are the main arguments offered by Kant to prove prove a priori synthetic judgment are possible? Discuss. How are the synthetic a priori judgment justifiable? According to Kant. Explain. Same, synthetic a priori judgment according to Kant, justify karo, discuss. What is the dialectical method in the philosophy of Hegel? How does this method help realizing absolute? 22 में आया था. 21 में क्या आया था? Discuss Hegel's dialectical method. Explain how it is dialectical method leads to the idealism. I mean, as it is question. Now his idealism is nothing but realizing the absolute. So if you see, if you understand thoroughly and you just repeat PYQs, your basic, I'm just saying this much. If you have thorough understanding, your own notes and things like that, which is the basic stuff, which will anyway you will do, and if you just solve PYQs twice, your 50% questions is already known to you. Question paper, both paper 1, paper 2. बचा क्या फिर? There won't be any surprise element, and rest of the questions also will not be that difficult if you know it. So there is a proper start to end. There is no ambiguity of ambiguity as in knowing what can come in paper. Most of the things will be already known. There will be 1 or 2 questions will be little aberration. That's not a big deal. वो भी वैसे भी आप टैकल कर पाओगे, ठीक है. और now see, establish the tenability of the later Wittgenstein's notion of language as form of life. Bring out the relationship between language games and form of life. ये भी विटगेनस्टाइन का सेम सवाल है, विटगेनस्टाइन का सेम. सो जस्ट इमेजिन it is coming in alternate years. We are bothered about that particular year called 2025. Now, why don't you think that इसमें से जो भी हमने, ये तो as I said ये बस सैंपल था. Why don't you think that इसमें से 60% रिपीट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. For sure, I can tell you now 2025 में actuality potential इस इतने, ये तो as I said this is only 20% of what is, because इतना मैं लंबा हो जाएगा स्लाइड, और भी बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे. बट आई कैन गारंटी यू इसमें से ये जितने भी टॉपिक्स है ना, 3, 6, 9, 12, उसमें से 8 क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूं आ रहा है 2024 की मेंस में, अभी बता रहा हूं. उसी के कंटेक्स्ट में 7 to 8 आई कैन नाउ टेल यू आ जाएगा, और भी उसकी थीम्स निकलेगी, उसी पे सवाल आता है, उसके अलावा सवाल ही नहीं आता. जस्ट इमेजिन इफ वन क्वेश्चन इज रिपीटिंग 5 times and almost everyone is repeating 5, 6, 7, 8 times, more than 5 only. That means पक्का ये आएगा. Statistical possibility है. Only thing is the wording will be little twisted. If your understanding is thorough, then it's a cake walk for you. Simple बहुत. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? Why I say it is less uncertain. Syllabus wise also less uncertain. Current affairs नहीं है. एंड पेपर्स रिपीट हो रहे हैं. हम सो जाते हैं बहुत सारे, टिपिकल कर रहे हैं, स्मार्टली उसको देख नहीं रहे. यस, फॉर मेनी और फॉर सम आई वुड से इट टेक्स इनिशियल टाइम. इनिशियल जो इनर्शिया होता है वो फिलोसॉफी के लिए घातक होता है. इनिशियली यू शुड पे अटेंशन, यू शुड आस्क क्वेश्चंस, यू शुड गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड, देन नोबडी कैन स्टॉप. कंसिस्टेंट रिजल्ट्स 300 प्लस, जैसे ये मुझे जितने पता चले, जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट द इंफॉर्मेशन अनलेस द पर्सन इज योर स्टूडेंट. जैसे 2022 में, 19 में, 18 में, 17 में 300 प्लस तो आ गई. लगभग एवरी ईयर देयर इज 1 पर्सन 296, 298, 300 प्लस. सो ऐसा तो नहीं कि 300 प्लस नहीं मिलता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सक्सेस रेशियो, ये यूपीएससी का एक रिपोर्ट आया था 2021, 17th रिपोर्ट ऑन सम रिफॉर्म. ब्रॉड एक रिपोर्ट हर साल लाते हो, एग्जाम कैसी गई, व्हाट आर दी नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, रूरल कितने हैं, ग्रेजुएट कौन से हैं, सब वो डिटेल एक रिपोर्ट लाते हैं. उसमें वो ऑप्शनल्स की भी दे डिस्कस. सो सक्सेस रेशियो इज अराउंड 6 to 8%, विच इज एवरेज सभी ऑप्शनल का है. नाउ हाई सक्सेस ऑप्शनल्स आर वेरी टेक्निकल ऑप्शनल, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी, लॉ, लिटरेचर, जो आप नॉर्मल नहीं लेते हैं, अनलेस यूर ग्रेजुएशन यू कैन नॉट टेक इट. ह्यूमैनिटीज में सभी इसी रेंज में आते हैं.
सोशियोलॉजी 9% हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी 8.99% हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस 6.57% हो जाएगा, लाइक दैट अराउंड एवरीबडी। सो सक्सेस रेशियो भी कोई कम ज्यादा नहीं है। ये एक परसेप्शन बन गया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड ये डाल दी, ठीक है। तो सी एंड वंस अपॉन टाइम तो बहुत ज्यादा आते थे फिलोसॉफी के, तो बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे, मोर देन लाइक 325 वगैरह मार्क्स आए हुए एग्जाम में 2013-14 में, ठीक है। तो रिजल्ट कंसिस्टेंट है, नो नीड टू वरी। लिंक विद GS4, सबसे डायरेक्ट लिंक क्या है? मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। वी हैव कांट, वी हैव शंकराचार्य, बुद्धा, जैन। वो सिलेबस पेपर में आता है, बुद्धा's कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। अभी इस बार महावीर आ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम चारवाका कंसेप्शन आ सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज चारवाका पार्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, GS ऑल्सो, पेपर 1। और षडदर्शन जो है हमारा, 6 स्कूल्स ऑफ क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, पेपर 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, उसमें भी वो आते हैं आपका। आई एम नॉट सेइंग वो तो बहुत छोटा एरिया है कोलैबोरेशन का, बट ये जो कोट्स है, जैसे कोई भी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सोक्रेटिस, ये कोट आया था 2019 में GS4 में ना। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, क्या लिखे। हाउ डू यू राइट अनएग्जामिन्ड लाइफ नॉट वर्थ लिविंग? नाउ हियर अनएग्जामिन्ड मतलब सेल्फ क्रिटिकल, ऑलवेज बीइंग अवेयर एज टू व्हाट एवर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग, खुद को एनालाइज करते रहो, राइट एंड रॉन्ग इन दैट कंटेक्स्ट। सो बहुत सारे यू टेक ये जैसे ए सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन, ये तो समझ में नहीं आएगा किसी को, मैं गारंटी दे रहा हूं पहले बार पढ़ने। ये एथिक्स के पेपर का कोट है, फिलोसॉफी के नहीं। ए सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज बेस्ड ऑन relative emotional values is mere illusion, a thorough vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates। क्या मतलब है इसका? नहीं समझ में आ रहा है सर। A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. I can tell you, the moment word illusion हमें पता होता है फिलोसॉफी वालों को, द होल कंसेप्ट जो बताने की कोशिश करे, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। जो रिलेटिव इमोशनल, ये भी है ना, रिलेटिव एब्सोल्यूट, इसका भी डिस्कशन होता है कि ये शब्द कहां से आया। रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज, रिलेटिव इंडिविजुअल, रिलेटिव लाइक मुझे लगता है कि ये सही है, होता है ना। जैसे स्पेशली योर ओन चाइल्ड, यू हैव सम प्रेफरेंस, उसको किसी ने कुछ मार दिया तो उसे लगता है कि कितना बुरा किया, यू नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग दैट दे हैव डन, यू टेक एथिकल स्टैंड देयर, बट दैट इज नॉट एथिकल स्टैंड देयर, दैट इज अ रिलेटिव इमोशनल थिंग। एंड उससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दैट इमोशनलिटी एंड एथिकलिटी एक ही चीज नहीं है। एथिकल इज बीइंग राइट, बीइंग राइट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, नॉट योर इमोशनल इंक्लिनेशन, मुझे बुरा लग गया इसलिए, ऐसे नहीं होता। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। और ये आई एम सेइंग, ये पता कैसे चलेगा? जो वर्ड्स है ना, रिलेटिव, इल्यूजन, ओके, देन कंसेप्शन, ये वर्ड फिलोसॉफी में हमेशा डिस्कस करते हैं हम। सो वंस यू गो थ्रू द फिलोसॉफी सिलेबस, ये कोड भी आपको लगेगा अरे हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बहुत लोगों को क्यों, चूंकि बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड दैट आई टॉक्ड अबाउट, डिफिकल्ट जाता है, ठीक है ना। लिंक विथ एसे, एसे का तो डायरेक्ट, अभी तो यू माइट हैव हर्ड दिस इन द मार्केट आल्सो, अरे फिलोसॉफिकल एसेज आने लगे आजकल, ज्यादा आने लगे हैं। एंड इफ यू सी यूपीएससी, व्हाट दे हैव डन इज स्लोली दे हैव इंक्रीज द नंबर एंड अमाउंट ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज। पहले क्या होता था कि यू कैन स्टिल skip the philosophical essays and still write one essay, 1 or 2 essays. Now what they have done is, एक पूरा सेक्शन फिलोसॉफिकल का रखते हैं, एक पूरा सेक्शन में 1-2 फिलोसॉफिकल होते हैं, दूसरे नॉन फिलोसॉफिकल होते हैं, तो एटलीस्ट 1 फिलोसॉफिकल आपको लिखना ही पड़ता है। ऐसे के लेक्चर में वो डिस्कस करता हूं मैं कि as to why they have come up with this, what is the logic UPSC has behind this। मुझे तो कभी कभी लगता है, ये तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मेरे पास, एक वाइल्ड थिंकिंग है, इन केस यूपीएससी डिसाइड्स टू
ड्रॉप ऑप्शनल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड थोड़ा और जीएस के 2-3 को जीएस 1 2 3 4 5 6 कर दें। आई एम श्योर उसमें एक कोई टॉपिक होगा जो फिलोसॉफी, बेसिक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट का आएगा, पक्का देखना। बिकॉज फिलोसॉफी का यूपीएससी का बहुत ओरिएंटेशन फिलोसॉफी, इंटरव्यू में भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे भी ऐसे ही आते हैं, एथिक्स लेके आ गए, व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली द डीप थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ब्रॉड व्यू ऑफ लाइफ, है ना, और प्रॉपर थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। बिगर पिक्चर, यस करेक्ट। सो दैट इज द रीजन, दैट इज माय हंच और दैट्स माय गट फीलिंग कि वो होगा, क्योंकि लॉ भी थोड़ा आएगा, लीगल पार्ट भी थोड़ा आएगा, पक्का आएगा। तो बीएसएस, बीएसएन, बीएनएस, बीएसएनएस जो भी नया आया है उसका कुछ ब्रीफ होगा, एंड ऑप्शनल कट कर देंगे इफ एट ऑल दे डिसाइड दैट। अभी कोई खबर नहीं है, डोंट मेक इट जस्ट ऐसे ही वाइल्ड थिंकिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, यस ऐसे आ गया, लोग ऐसे हो गए एकदम आफ्टर दिस, ऐसे मेनी ऑफ माय स्टूडेंट कॉल मी सर ऐसे, तो क्योंकि ये पता है ये 10 मार्कर, 20 मार्कर, 15 मार्कर फिलोसॉफी में 10 बार आ चुका है। हीगल का स्टेटमेंट, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, ये फिलोसॉफी में हो गया। सेम स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे डाल दिया। ऑब्वियसली वहां पे हीगल की फिलोसॉफी नहीं लिखनी है, बट व्हाट हैपेंस, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी कंफर्टेबल, यू नो दैट फ्रॉम व्हाट कंटेक्स्ट हीगल वाज ट्राइंग टू से दिस, एंड किस कंटेक्स्ट में उसको एक्सपांड किया जा सकता है। You know, in the essay lecture I certainly tell that don't get confused कि philosophy का data इधर लिखना है, but your understanding becomes easy because your starting point is very comfortable for you. Thinking is like a game, it does not begin unless there is an opposite team. Critical thinking का questioning की बात हो रही है, ये सब philosopher को तुरंत समझ में आता है। Mathematics is the music of reason. Now ये रीजन, मैथमेटिक्स, ये डेकार्ट वगैरह पूरा यही, मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन, इसका एपिटोम है डेकार्ट, कांट, लाइबनीज, ये मैथमेटिशियंस थे। सो यू अंडरस्टैंड व्हाई इसके, लाइक यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, बुद्धा, प्लेटो दोनों ने बोला हुआ है, ऐसे क्यों? क्षणिकवाद क्या है? यही है, क्षणिकवाद लिखना नहीं है उधर, बट यू अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी नॉर्मल थिंग्स दैट यू कैन सी. Just because you have a choice does not mean that any of them has to be right. Existentialism, a proper existentialism thought है that with every choice comes responsibility. So you are free to choose but responsible for your choices. Your perception of me, ये तो लोग मतलब nobody, I think that year nobody could write it unless somebody who has done philosophy and understood and थोड़ा courage होता है. Complex statement. Your perception of me is the reflection of you and my reaction as you is awareness of me. ये सवाल ऐसे में आ चुका है. So philosophy of wantlessness is utopia while materialism is a chimera. You be exact, ये तो पक्का as it is philosophical reference देके लिखना. बुद्धा ने क्या बोला, चारवाक ने क्या बोला, materialistic philosophies क्या बोलती है, सब चीज इसमें आ जाती है. materialism क्या है and wantlessness क्या है, renouncing, ठीक है. So I am not saying that the syllabus and the content as it is going to be used in essay. You should not be using it because वो फिर अच्छा नहीं होगा, because it won't be essay then, वो आंसर हो जाएगा. But it will certainly be helpful for you to understand from where this quote is coming, to understand what is the meaning of this complex jugglery of words means. As I said, what is illusion, you know, what is relative means, relative absolute, वो हम डिस्कस करते हैं पूरा relative और absolute में क्या डिफरेंस. सो इस इन दिस वे इट हेल्प्स इन एसे. इंटरव्यू में तो क्या ही बताएं, बिकॉज आई ओनली टेक द इंटरव्यू सेशंस हियर ना, मॉक इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो मैंने तो एटलीस्ट नॉट लेस देन 400 मॉक इंटरव्यूज लिए हैं अभी तक. इंटरव्यूज में एग्जैक्टली क्या होता है, your ability to understand what is being asked. Your content is not that important, but are you able to understand what is being asked? Are you able to express what you want to say? उसके लिए vocabulary चाहिए, complex situations explain करने के लिए complex vocabulary चाहिए,
एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रोसेस, आपकी परसेप्शन, योर परसेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, इज इट ब्रॉड और इट इज वेरी नैरो। और ये सब इनडायरेक्टली फिलोसॉफी वालों को मदद करता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टली फिलोसॉफी का कोई पूछेंगे नहीं कि चार वाक्य बताओ या विटगेनस्टाइन बताओ, ये तो नहीं पूछते, अनलेस यूर आपका ऑप्शनल फिलोसॉफी है, वो अलग डिबेट जाएगा, वो तो ऑप्शनल का सवाल हो गया। सोशियोलॉजी, फॉर सोशियोलॉजी पीपल दे विल आस्क सोशियोलॉजी, फॉर एंथ्रोपोलॉजी, फॉर हिस्ट्री दे विल आस्क हिस्ट्री, एंड फॉर philosophy they will ask philosophy. But in general also, what happens? Your critical thinking, your broad view, all the things that we say, deep thinking ability. Deep thinking means any statement that has a deep meaning, deeper meaning, you will be able to say about it. Logical stamina, rationality, objectivity, argumentative efficiency. What is argumentative efficiency? When you argue in less possible words, very precisely, you can communicate. That is called argumentative efficiency. Otherwise, you say 3-4 statements and somehow you could communicate the small message. But if you are precise, if you know complex words meanings also, you can precisely say it. Going to the basics, ये philosopher की एक आदत बन जाती है. Reference to the great thinkers always helps. बुद्धा ने ये बोला, कांट ने ये बोला, प्लेटो ने ये बोला. You can just refer them because they are the great thinkers. Overall awareness of the great thinkers, you know, Buddha, Mahavir, Shankaracharya, Aurobindo, Plato, Aristotle, Kant, etc. Solid justification of ethicality. ये क्योंकि हम एथिक्स भी पढ़ते हैं, GS4 में भी पढ़ते हैं, देन यू अंडरस्टैंड, जैसे कांट की डिओंटोलॉजिकल अप्रोच क्या है, यूटिलिटेरियन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या है. नाउ दिस वर्ड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटी, डिओंटोलॉजी, moral obligation, categorical imperative, ये words ही कैसे आएंगे आपके brain में, आपके बोलने में, unless you know it. Complex words in vocabulary, that's what I'm talking about. So in interview also it helps. And in GS में भी, as I said, art and culture, Indian school, ये already देखा हमने, Indian school होगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म पे GS1 में कुछ ना कुछ सवाल आता ही है, एथिक्स में कुछ ना कुछ सवाल आने के चांसेस है, इंटरव्यू में बुद्धिज्म, जैनिज्म तो इज लाइक अ स्टेपल इंडिया का, राइट. मोरालिटी में भी है, रिलीजन में भी है, इंस्पिरेशन में भी है, कोट्स में भी है. क्लासिकल इंडियन स्कूल्स लाइक षडदर्शन क्या है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ऑलरेडी डिस्कस. फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पेपर 2 का एक पॉइंट है. आप अगर इफ यू गो बैक टू GS2 मेंस का सिलेबस, उसमें देखना फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड दैट पर्टिकुलर वे, what is the philosophical thinking behind that, what was the logic. जैसे as I said, secularism क्या है, democracy, ये syllabus का point है ना. Have you seen secularism? हम उसके बाद देखेंगे थोड़ा briefly. Secularism, democracy, humanism, okay, इस word के क्या meaning है. जैसे हमने बोला धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो अलग context है, और हमारा पूरा politics उस पे चल रहा है आजकल, तो religion और secularism पे. So it's better. and पक्का सवाल आता है हर साल. Of late, last 5-6 years, there will be certainly some question on either religious absolutism and secularism. So आप देखो, everything is almost like if you gather small things and put together, you already know 30% paper that is going to come for you. Just imagine if you already know what is going to be like. आपके पास कुछ 50 questions है, you know of that 20 questions are going to be repeated. Don't you solve these 50 questions at least 3 times, क्योंकि उसमें से 20 तो आने ही आने हैं. Like that it is. Constitutional morality, ये तो पेपर 4 में भी होता है, पेपर 2 में भी आया हुआ क्वेश्चन, यू नो दिस. GS2 में दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम, GS4 में ट्वाइस. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी GS4 में ट्वाइस and GS2 में once. And in interview they have asked many students, what do you understand by constitutional morality? ठीक है. Religious studies, Hinduism, Christianity, we already discussed, like Hinduism and Christianity. Paper 2, section 2, philosophy of religion, God of Christianity, God of Hinduism, ब्रह्म क्या है. गीता पे भी सवाल आया है, you know, ब्रह्म पे भी सवाल आया है. Relevance of भगवद गीता and its message of निष्काम कर्म, ये भी सवाल आया है. फिलोसॉफी में आया, मैं बोल रहा हूँ.
करंट इश्यूज इन न्यूज। अभी करंट इश्यूज इन न्यूज मतलब उसको आपको कवर नहीं करना है, बट उससे आपको एक लिंक मिल जाती है। जीएस में मैं बोल रहा हूं, तो कभी कभी जैसे स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी रामानुजा, तो प्रीलिम्स में रामानुजा पे सवाल आया था, फिलोसोफर्स ने तुरंत, फिलोसफी ऑप्शन वालों को सब पता है रामानुजा की फिलोसफी सिलेबस में है। मेंस में भी ऐसे सवाल आते, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ सवाल आया, तो what happens is automatically 2-3 points of yours would be slightly different than the common people, because you will be talking about Buddhism, the reference of Nalanda. History optional student also will be able to write it better because they also know the context. So स्टैच्यू ऑफ वननेस जो एकात्म धाम बनाया था एमपी में, जिनमें शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति अभी 6 महीने पहले इनॉग्रेट हुई, तो उनका क्या, उस पे उसके बेसिस पे एक सवाल आ जाएगा शंकराचार्य पे। फिर शंकराचार्य की बेसिक्स तो आपको पता है, तो इट हेल्प्स यू इन जीएस वेरी फ्यू, आई एग्री, जीएस 1 2 3 आई एम सेइंग, स्पेशली 1 में ज्यादा मदद करता है, 2 में थोड़ा बहुत सोशो पॉलिटिकल वाला पार्ट, 3 में वो रिलीजन वाला कॉन्फ्लिक्ट वगैरह उस पर एक सवाल आ गया था। देखो, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली यू कैन यूज इट एनीवेयर एंड इट्स वेरी वेरी हैंडी ऑल्सो। वेरी फास्ट एंड ब्रीफली देखेंगे पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। मोस्ट ऑफ यू आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दिस बिकॉज आई कैन टेल यू, फॉर यू फिलोसॉफी ऑप्शनल, योर गीता, बाइबल, कुरान, एवरीथिंग इज syllabus and PYQs. These two should be like, मतलब सोते समय इस साइड में सिलेबस और इस साइड में PYQs रख के ही सोना है। ये मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है, एक्चुअली नहीं सोना है, बट इतना यू हैव टू बी विद इट ऑल टुगेदर, PYQs एंड सिलेबस। सो पेपर 1 में 2 सेक्शंस है, वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड इंडियन फिलोसॉफी। पेपर 2 में 2 सेक्शंस है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, पेपर 2 हो गए। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सेक्शन ए सेक्शन बी उसमें भी रहता है, जैसे ये सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी क्लियरली डिवाइडेड होता है, कंफ्यूजन नहीं। सेक्शन ए में से आपको पहला क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में पहला, दैट इज 5th क्वेश्चन, दोनों कंपलसरी होते हैं, 10-10 मार्क में लिखने ही होते हैं। ठीक, सो सेक्शन 1, ये पेपर 1 में आपको मिलेगा सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इधर होएगा वेस्टर्न फिलोसॉफी, इधर इंडियन फिलोसॉफी। उसमें पहला क्वेश्चन, इसमें पहला, दैट इज 5th क्वेश्चन, ये कंपलसरी है एंड दे आर 10 मार्कर्स। फिर क्वेश्चन 2 3 4 6 7 8, राइट, 2 3 4 6 7 8 में से एनी 3 लिखने हैं, 6 में से एनी 3 लिखने हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, ये तो है। तो बेसिकली क्या है, पहले ये और ये लिखना ही है, फिर 3 में से 1 लिखना है, 3 में से 1 लिखना ही है, और बचे हुए 4 में से फिर कोई 1 लिखना है। ये सभी ऑप्शनल के लिए है, ये कोई सिर्फ फिलोसॉफी के लिए नहीं, यूपीएससी का यूनिफॉर्म पैटर्न है, बट आई कैन टेल यू ये फिलोसॉफी ऑप्शनल के लिए वेरी वेरी कंड्यूसिव और एप्ट होता है। व्हाई? बिकॉज हमारा सिलेबस जो है ना वेरी वेल डिवाइडेड है, वेरी वेल डिवाइडेड। इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इधर का उधर। द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन विदाउट यू टेलिंग मी, आई कैन टेल यू ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन में और कौन सा वाला है, 10 मार्क का है, 15 मार्क, इतना आसान हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। इंडियन फिलोसॉफी के सिलेबस वेरी फास्ट देखेंगे, इसमें तो इतना कोई नहीं है। चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांतन, औरोबिंदो। ओके, जैसे मैंने बोला चारवाक, थियरी ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटी, मतलब मेटाफिजिक्स, एंटिटीज की बात हो रही है। पहले थियरी ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, परसेप्शन और रिजेक्शन। जैनिज्म, थियरी ऑफ रियलिटी, मतलब मेटाफिजिक्स, उसी का पार्ट है सप्तभंगी नय and bondage liberation. So otherwise Jainism literature is like you required to Jainism हो, Buddhism हो और Hinduism, तो आप मतलब you will at least need 6-7 lives to read everything. So much of literature. India is very great in that way. Now Nyaya Vaisheshik, Sankhya Yoga and Mimamsa Vedanta are Shada Darshana. Shada means
6. दर्शन is philosophies. So न्याय वैशेषिक 1 2, सांख्य 3, योग 4, ये दोनों साथ में आते हैं, सांख्य योग साथ में आते हैं, मीमांसा वेदांत साथ में, ठीक है, इस लाइक 3 into 2. एंड औरबिंदो इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, इंटीग्रल, 3 ही पॉइंट्स हैं, 3 पे ही सवाल आता है, या तो और इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन कोई अलग पॉइंट नहीं, इट्स सेम पॉइंट. तो बेसिकली सवाल इधर आएगा इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन में और इंटीग्रल होगा, उसके अलावा सवाल ही नहीं आएगा. दे विल बी सवाल क्वेश्चन ओनली ऑन दिस. सी अगेन यू विल से कि सर इतना अगर आसान है, तो आसान वो नहीं है. आसान ये है कि सडनली जब ये शब्द आता है अप्रत्यक्ष सिद्धि, इसका मतलब क्या है भूल जाते हैं, अनलेस यू डू रिवीजन. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम इन फिलोसॉफी, बिकॉज दीज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यू हैव टू ऑलवेज कीप विजिटिंग इट. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं जैसे February, March, April, May, these are the 4 months you generally don't touch philosophy. Obvious सी बात है for prelims. That's why the moment prelims is done, within 3-4 days you should immediately start revising philosophy paper 1. Otherwise, and if you do it, then you will be at a greater advantage. But many people don't do it for I don't know for whatever reasons. वहां पे कहीं ना कहीं लोग कम पढ़ते हैं, सभी ऑप्शनल के पढ़ते हैं, लेकिन देखो you need to understand one thing. There is one benefit of this optional is that you know exactly the syllabus, you know what kind of questions, so there is no need to go beyond that current affairs and stuff. But that also means that you cannot take help of current affairs too much. कुछ कुछ लिख के आ गए इधर उधर से, नो, वही लिखना है जो है क्लियरली. बाकी पेपर्स में क्या होता है, एटलीस्ट इन अदर ह्यूमैनिटीज में, यू कैन राइट समथिंग हियर एंड देयर, तो वो बेनिफिट नहीं मिलता. वो बात अलग है कि उससे कोई मार्क्स ज्यादा आते नहीं है, बिकॉज जो पूछा है वही लिखना होता है, बट यू हैव टू रिवाइज. सो दिस इज द सिलेबस, राइट. वेस्टर्न में प्लेटो, अरिस्टोटल, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, कांट, हीगल, मूर, रसेल, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लेटर विटगेन्स्टाइन, फिनोमेनोलॉजी, एक्जिस्टेंशियलिज्म, क्वाइंस-रॉसन. ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अलग अलग, यू नो, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग. डिफिकल्ट कुछ नहीं है, हर एक का लिमिटेड सिलेबस है. मीनिंग एंड यूज, लैंग्वेज गेम्स, जो ऑलरेडी हमने सिलेबस एक क्वेश्चन देखा, लैंग्वेज गेम्स, एंड क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज. ये बहुत छोटे 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 पॉइंट्स हैं, बट unless you understand the context from where the philosopher is coming and the content of what the philosopher is saying, बस context and content दो, ठीक. तो ये प्लेटो, अरिस्टोटल, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, कांट, हीगल, मूर, रसेल, अर्ली विटगेन्स्टाइन, ये क्लब ही है. लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लेटर विटगेन्स्टाइन, ये वही विटगेन्स्टाइन है, ये विटगेन्स्टाइन भी है और ये एक ही है. ये अर्ली सेम पर्सन रोट अ बुक ट्रैक्टेटस फिलोसॉफिको लॉजिकस, ऐसे लॉजिको फिलोसोफस, ऐसे किताब लिखी, TLP, एंड लेटर ऑन ही राइट लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, दूसरी किताब लिखी. इन सेकंड बुक ही क्रिटिसाइज द फर्स्ट बुक. दैट्स व्हाई ये अलग पर्सन माना जाता है, ये अलग पर्सन माना जाता है, ठीक है. फिनोमेनोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्जिस्टेंशियलिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसॉफी, ठीक. तो ऐसा है. पेपर 2 में तो और सिंपल है. इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, सॉवरनिटी, इंडिविजुअल एंड स्टेट राइट्स, स्टेट्स एंड इंडिविजुअल एंड स्टेट राइट्स एंड ड्यूटीज, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, मोनार्की, थियोक्रेसी. ये तो इतना आसान सवाल आता है, इस पे तो पहले से ही पता होता है क्या आने वाला. पॉलिटिकल एनार्किज्म, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म, वी ऑलरेडी सी दैट कम्युनिज्म आल्सो पार्ट ऑफ द मार्क्सिज्म. ह्यूमैनिज्म, सेक्युलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, आजकल बहुत बात होती है इन दो की, मल्टीकल्चरल सोसाइटी होनी चाहिए. क्राइम एंड पनिशमेंट, जैसे करप्शन, मास वायलेंस, जीनोसाइड, कैपिटल पनिशमेंट, उसका अंडरस्टैंडिंग, इसके पीछे का व्हाई दीस थिंग्स हैपन, व्हाट कैन बी डन. डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, एकदम सिंपल, एक सवाल आता है बस, फिक्स, एक से आएगा ही नहीं अभी, क्योंकि पिछले 25 साल में कभी नहीं आया एक से ज्यादा सवाल, एंड कभी कभी एक भी नहीं आता, एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें सवाल है. इसमें एनवायरमेंटल वगैरह इश्यूज आते हैं, प्रोग्रेस कैसे होती है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फोर्टिसाइड, लैंड प्रॉपर्टी राइट्स, एम्पावरमेंट, वो तो आपको पता ही है. एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, गांधी एंड अंबेडकर. यहाँ पे क्लियरली सवाल वही आता है, गांधी के व्यूज क्या है, अंबेडकर के व्यूज क्या है, दोनों का झगड़ा क्या है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता. ऑलवेज क्वेश्चन लाइक दैट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, आई थिंक, एंड मोर रिलेवेंट ऑल्सो. यू लाइक टू नो.
गॉड के अलग अलग नोशंस, या नोशंस मीन्स कंसेप्शंस, नो, क्या गॉड ह्यूमन है, पर्सोनिफाइड कंसेप्शन है, निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, मूर्ति पूजा है, आइडोलेट्री है, आइडल वर्शिप है, नहीं है। गॉड क्या रेगुलेटर है, मॉनिटर है, छड़ी लेके बैठा है, या प्यार करने वाला है, डिफरेंट कंसेप्शंस। यू नो, गॉड लव्स यू, क्रिश्चियनिटी में होता है ना, इस्लाम में गॉड लव्स नहीं होता। देखा है कभी गॉड लव्स यू? नो, गॉड मालिक होता है, आप अपना ढंग से काम करो, नहीं तो गॉड आपको पनिशमेंट देगा। गॉड आप अच्छा काम किया तो पैसा देगा, नहीं किया तो पनिशमेंट देगा। हमारा भक्ति मूवमेंट में गॉड एकदम दोस्त प्यार जैसे, मतलब बिलव्ड, मीराबाई, कबीर, संत तुकाराम, गॉड इज लाइक समबडी हु इज बिलव्ड। ब्रह्म का, शंकराचार्य का या रामानुज का गॉड एकदम एमिनेंट गॉड है, हर जगह गॉड है, ये बैक भी गॉड है, सब जगह गॉड। अलग अलग कंसेप्शन है, इमेनेंट क्या है, ट्रांसेंडेंट क्या है। इफ यू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैन बी एप्लीकेबल, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज की डेट में अगर देखेंगे नहीं, ये झगड़ा इतना क्यों है, कंसेप्शन अलग अलग क्यों है, अब्राहमिक गॉड्स क्या है, धार्मिक कंसेप्शन क्या है, इंडिक कंसेप्शन क्या है, चलो अलग अलग है, ठीक है। फिर गॉड एक है या मेनी है, उसका क्या झगड़ा है, यू नो, है ना सिलेबस, ये देखो, रिलीजियस प्लूरलिज्म, प्लूरल मतलब मेनी, एंड द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ का कि यही सही है, बाकी सब गलत है। तो अब्राहमिक रिलीजन में ऐसे होता है, दिस इज द ओनली गॉड, बाकी नहीं है। इंडियन में कि ये भी गॉड है, गणेशा भी गॉड है, हनुमान भी गॉड है, दुर्गा माता भी गॉड है, भैरवनाथ भी गॉड है, जगन्नाथ भी गॉड। तो एंड दिस कंसेप्ट नाउ हियर देन गॉड बिकम्स सो मेनी। सो मेनी गॉड कैसे हो सकते हैं? तो फिर कंसेप्ट आता है अवतारवाद का, अवतारिज्म, अवतारवाद, वॉट एवर यू वांट टू कॉल। अवतारवाद मीन्स गॉड एक ही है, उसके अवतार है। फिर कंफ्यूजन वेस्टर्न वालों को, पहले उन्होंने लगा कि यार ये देख के थोड़ा सा ब्रीफली डायग्रेस हो रहा हूँ, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि यार इतने गॉड कैसे होते हैं, ये पागल लोग कुछ भी गॉड बना रहे हैं, पत्थर को भी बना रहे हैं। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि गॉड इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, सो यू क्रिएट वॉट एवर पॉजिटिव फॉर यू। बट इंडिया में सिर्फ ऐसे सब्जेक्टिव गॉड्स नहीं है, एवरी गॉड इज ए लिंक्ड विथ ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, एंड पूरी माइथोलॉजी उसी के लिए लिखी गई। ये गॉड इसके पास गया, इसकी फैमिली भी है, तो इट्स वेरी क्लोज टू ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी। एंड गॉड इतने सारे नहीं है, ये अवतार है गॉड्स, अल्टीमेटली इट इज ब्रह्म। तो फिर लोगों को लगेगा अरे ये तो ब्रह्म है अल्टीमेटली। सो देयर इज ओनली वन रियलिटी इन इंडियन ऑल्सो, ब्रह्म। आई मीन हिंदू रिलीजन जिसको बोल सकते हैं, या धार्मिक सनातन वॉट एवर। सो रियलिटी इज वन। सो देन दो जो सोचने वाले लोग हैं वहां पे, जैसे देयर इज दिस फेमस जर्मन फिलोसोफर कॉल्ड आर्थर शापनहॉर। वो तो ऐसे है कि आई गॉट सोलेस व्हेन आई रेड उपनिषद्स, आई गॉट सोलेस इन माय लाइफ एंड इन माय डेथ, नाउ आई कैन पीसफुली डाई। इवन दिस क्या नाम उसका, ओपनहाइमर, he also credited or he also commented on Gita as to the ultimate destruction। and ये जिंदगी, वर्ल्ड जो है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन साइकिल्स चलते रहते हैं, ये तब बोला हुआ है। सो ये इफ यू स्टडी दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इंडियन रिलीजियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इज रियली अ रिच ट्रेडिशन एंड ए गिफ्ट टू वर्ल्ड। लोगों को भी सोचना चाहिए ऐसा है, यू फील प्राउड अबाउट इट। प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड देयर क्रिटिक, कि गॉड के एग्जिस्टेंस में क्या प्रूफ्स है। ये इंटेलेक्चुअल प्रूफ्स है, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है। ओके, ऑन व्हाट बेसिस ऐसा है। प्रॉब्लम ऑफ एविल, वो वेस्टर्न वाले में आता है, इंडिया में ज्यादा नहीं आता, बट ठीक है। इमोर्टैलिटी है नहीं है, रीबर्थ, लिबरेशन। रीजन, रेवेलेशन एंड फेथ में क्या फर्क है? रीजन मीन्स, रेवेलेशन मीन्स किताब, आसमानी किताब, रिवील करना, रेवेलेशन। एंड फेथ, फेथ यू नो, भक्ति, ऐसा। रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या होता है? रिलीजन विदाउट गॉड हो सकता है क्या? रिलीजन एंड मोरालिटी का क्या रिलेशन? डोंट यू थिंक इट्स वेरी, इफ यू रीड दिस मच at least, for sure you will be different person. Okay, and obviously it will help a lot in essay। यही से उठाए जाएंगे बहुत सारे पॉइंट्स।
मोरालिटी की बात आएगी रिलीजन की, सिलेबस कोई ना कोई होगा ऐसे टॉपिक, रिलीजन गॉड का ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे मुद्दे पे आते हैं, मार्क्स कैसे लाने हैं। तो जो चीजें, द थिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग, सेम थिंग्स आई लाइक टू डिस्कस अगेन। अंडरस्टैंड, रिवाइज, इंटरलिंक, राइट, deliberate. Take for example Shankaracharya, understand him, revise the notes, interlink it with others, write answers. Deliberate means whatever answer you have written, you deliberate upon. Again, understanding improved, again cycle. That's the only, this, if you follow this cycle, philosophy is done, of which understanding this solid framework is done in the class. Because if you start reading on yourself, it takes a lot of time to you'll understand. Once you start, many students are like that, they spend a lot of time initially and then later on realize that nahi samajh mein nahi aa raha hai. Some people able to do it, especially those who have done graduation, they might be able to understand it because they have given 3-4 years with that. Listen to some teacher na, but somebody who is engineer and others, they wouldn't have listened to someone, so they will keep understanding or devising their own meanings of things, which is not the case, right? So first, understand, conceptual clarity, very very important. Like I have seen many people, even after writing mains, they do not understand like what pratitya samutpad means. I have seen it, the circle of pratitya samutpad, they don't understand. You know, it starts with suffering and it ends in ignorance, and they connect ignorance with suffering again. This is one example how people went wrong in their understanding, in my experience, when they came to me after they had written mains, I am talking about. Okay, or nobody knows what is the relation between Kant and Shankara because they have never seen in that point of view. They only know Shankaracharya and Spinoza. That is one way because it's very obvious, but even Kant and Shankaracharya is also connected. That I'll tell you how, because once you understand, you yourself will know. Spinoza is closer to Ramanuja's, Spinoza's God is closer to Ramanuja's God, not Brahma's, Shankara's Brahma. You'll understand why I'm saying this. Closer, I'm not saying completely away. Schools of Buddhism, many don't understand. Again, I'm telling you, because you just take notes, read and go ahead. And then question comes little twisted. Question will come on the same topic, but little twisted. Then you don't know. Okay. Middle path. Like for example, Kshanikvad itself is a middle path. Middle path does not only mean don't just take any extreme in your decisions. No. Even Kshanikvad is a philosophical middle path. Eternalism and nihilism के बीच में है. Being and non-being के बीच में becoming है. अष्टांग योग है, अष्टांग मार्ग, वो भी मिडिल पाथ है. एब्सोल्यूट लग्जरी भी नहीं होना है एंड एब्सोल्यूट ऑस्टेरिटी भी नहीं होना है, उसके बीच में चलना है. बुद्धिज्म के समय में बताऊंगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग, एज आई सेड, इवन आफ्टर राइटिंग मेंस पीपल डोंट हैव. ओके, नुआंस डिफरेंस इन रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिस्ट, आइडियलिस्ट, पॉजिटिविस्ट, मटेरियलिस्ट, मोनिस्ट, कौन, इसके मीनिंग्स क्या है. एंड बाय द वे, ये इतनी ही टर्म्स है जितनी मैं बोल रहा हूं घुमा फिरा के. वो अगर इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड मटेरियलिस्ट, नहीं समझ में आता. व्हाट इज द सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट, मटेरियलिस्ट एंड हेडोनिस्ट, नहीं पता. चारवाक है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स लॉजिकली ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, लाइक आइडिया का क्या मतलब होता है. माइंड मीन्स व्हाट. In Indian context, there is no mind. There is chitta, buddhi, ahankar, manas, आत्मा. ये अलग चीजें हैं. चित्ता, बुद्धि, अहंकार, मनस, ये आत्मा नहीं, आत्मा और अलग है. ये चार, जैसे सांख्य में ये जो चार है वो प्रकृति के करेक्ट पार्ट्स हैं, पुरुष के नहीं है. पुरुष आत्मा है. तो ये चीजों का मतलब आत्मा, एग्जैक्टली व्हाट द आत्मा मीन्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड, सोल, आत्मा, सेल्फ.
तो ये चीजें जब तक समझ, जनरली सेल्फ ऐसे नहीं यूज करना है, ठीक है, एंड इट्स नॉट अगेन डिफिकल्ट ऑल्सो। जैसे डिफरेंट एग्जिस्ट करना, एक्चुअल होना, रियल होना, तीनों में फर्क है। एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल है या रियल है? हाउ डू यू नो? एग्जिस्ट इज समथिंग विच नीड्स स्पेस और विच एक्सटेंड्स इनटू स्पेस, वो एग्जिस्टिंग होता है। जो टाइम, जिसके लिए टाइम चाहिए, जो टाइम में है, वो एक्चुअल है। एक्ट जैसे होती है, एक्ट के लिए टाइम चाहिए होता है, एक्ट इज अ प्रोसेस, बट रियल उसके बियॉन्ड है, स्पेस एंड टाइम के भी बियॉन्ड। वो देखेंगे हम जब हीगल देखेंगे। हाँ, फिर जिसको स्पेस चाहिए, एक्चुअल मीन जिसको टाइम चाहिए। नो, टाइम नॉट नीडेड, नो। व्हाई टाइम इज नीडेड फॉर एक्सटेंशन? नो नो, वो तो वो सही स्टेटमेंट है, हम तो ये बोल रहे कि टाइम एग्जिस्ट, यही तो मैं बोल रहा हूं। टाइम इज रियल ये बोल सकते हैं, एग्जिस्ट मत बोलो। देखो, देयर इज वन मोर थिंग, गुड दैट यू पॉइंटेड दिस आउट। देयर आर मेनी वर्ड्स दैट वी यूज इन नॉर्मल पार्लेंस इन अ वेरी डिफरेंट कंटेक्स्ट। उसका वो कंटेक्स्ट नहीं होता। एंड बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग कि वो डिफरेंट है, डिफरेंट है। You will understand why the philosophy one is the correct one and how it got changed over the period of time, and now people mean this word means that. Idea or ideal. Ideal means what? आइडिया से आने वाला आइडियल, जो रियल फिजिकल नहीं हो सकता। ये प्लेटो का कंसेप्ट है। वो तो फिर अलग अलग थेरीज है, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट आई एम सेइंग whatever is in the time is actual, whatever is in the space is existing, बट इसके टाइम एंड स्पेस के भी बियॉन्ड जो है वो रियल है, ठीक है। तो ये अलग अलग मीनिंग है इसके, ये समझ में नहीं आता लोगों को, वो जब पढ़ेंगे तब। रिवाइज, रिवाइज में तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले बोला, वन फिलोसोफर वन पेज वन फिलोसोफर गोल। टोटल एक्चुअली 20 रिवीजन का टारगेट रखते हैं हम, वो एक साल में पूरा, एक साल मतलब जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 3 के बाद भी पढ़ेंगे उसमें। As the topic is abstract, you need to revisit again. I already told you. One step solution for every philosopher: keep enriching. You know, एक जगह Kant है, whatever you read, whatever you hear about Kant, add it to that notes. Different color से, different green, blue, yellow करो जो भी पेन, but एक ही जगह वो Kant होना चाहिए. That's how your note should be. Then only you'll be able to revise. And without you revise, you cannot do anything in philosophy. Optional. ट्री डायग्राम, माइंड मैप बनाना, वो सब देखेंगे हम एज few notes, terms, a few quotes, terms, diagrams to remember, which reflect core idea of the philosopher very precisely. So these are the techniques to revise, and it's very very important. If you do it, note making, okay, we are doing the same thing. Understand, revise, interlink, write and deliberate. यही चीज हम डिस्कस, समझ में आया ना? द फर्स्ट डायग्राम। इंडेक्सिंग, you should know what are the syllabus, and it's very easy, very limited syllabus, okay. Printed notes, class direct dictation and books, ये तीनों मिल जाएगा आपको, तो ऑब्वियसली है ही। इंटरलिंक, कंपैरेटिव अप्रोच, very important for marks, because but this is second third level, एक 4 5 6 रीडिंग होने के बाद you will be able to understand this. Even if you do this comparative after June also, it's, I mean after prelims also, it's okay, because वो direct final result है, मतलब it's like a final stage, indicates the final stage of your understanding. उसके बाद कुछ नहीं बचता, फिर सीधा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. देन इफ यू अंडरस्टैंड वन फिलोसोफर थरली, बाकी फिलोसोफर को अंडरस्टैंड करना आसान. जैसे वेस्टर्न में कांट है, इंडियन में शंकराचार्य है, दोनों समझेंगे पूरा, बाकी फिलोसोफर समझना आसान हो जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरलिंकिंग. Aristotle evolutionary approach, how it is related to Aurobindo.
how the concepts of God, soul different in different philosophers, comparative understanding of epistemological stand of all philosophers. Epistemological stand means how they differ their process of knowing, accordingly the reality also changes. Sub cheese, see, these are the directions in which we will also go and you will also understand. But it is very crucial. That is exactly called interlinking. But without this, your answer cannot be best. It can be 3.5, 4 out of 10. But if you do this, it can reach to 7, 7.5. Answer writing, obviously there is a technique, intro, main body, managing appropriate subheadings, addressing the exact demand of the question. 10 marks to already seen, 10 marks, 15 marks, तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं. टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Just knowing the points is not important. You should be able to write those points in that limited time, 7 minutes, 11 minutes and 20 minutes, 14 minutes. Okay. Ability to tackle unexpected question by practice. As I said, some questions will be unexpected, but still you know how to tackle it. Okay. जैसे ये क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन पुद्गल नैरात्म्यवाद एंड धम्म नैरात्म्यवाद विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट फिलोसफी. ये उस समय नॉर्मली किसी के भी नोट्स में नहीं था, बट यू कैन अप्लाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुद्गला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नैरात्म्यवाद. यू विल बी एबल टू राइट द आंसर. How does Plato use the theory of forms to establish the relation between epistemology and metaphysics? So सिर्फ theory of forms पता हो कि नहीं, उसका एक स्टेज भी तो जानना है. Once you understand what theory of forms is, then his understanding of what is knowledge and what is reality, very important. And then deliberate. After you write the answer, then there is enrichment, enhancing the comparative understanding. वो further enhance हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है ना, deliberate is basically with others, be it your somebody whom you are studying with or with me. If you show your answer, I'll be able to tell you ऐसा नहीं ऐसा है. ये भी बहुत important होता है, because then you newer and newer aspects get into you. But again, these are the later stages. First stage is basic understanding, second is revision, third is interlinking your own self, and then answer writing. अंडरस्टैंडिंग से आंसर राइटिंग तक फाउंडेशन का ही पार्ट है. डेलिब्रेट है वो प्री के बाद का है कि आपने आंसर लिखा, फिर उस पर बीच बीच में भी आप आंसर लिखेंगे, उसमें फीडबैक मिलेगा, लेकिन स्पेशली वो थोड़ा सा लेटर स्टेज है, कोई अभी उसका टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर योर गुड मार्क्स. बेटरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल फिलोसोफर्स, ब्रॉड क्लैरिटी ऑन ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स, रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिस्ट, ये सब once you study, broad clarity आना शुरू हो जाता है. And the small aspects and the broad aspects, both you should know. Broad aspects is required to know so that you know what exactly, what topic, what point is required to be written here. And small aspect also you should remember, what is that point, what should I write now exactly. You are getting the point. The direction of the question and actual taking the steps, both are required. It's not just broad or not just small, and it's possible. You start with the small only, you reach to the broad, and then while writing the answer again from broad, we come to the small. ये हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, just matter of practicing. Now course structure तो आपको पता ही होगा already, you might have seen it. 100 lectures, lecture on each part of the syllabus, deliberative approach वो तो होता ही है क्लास में, because I generally discuss. Thorough coverage of paper 2 का भी पूरा कवरेज होता है, 5 days a week होता है, so that you have time for revision. Notes classroom में भी मिलेंगे, printed में भी मिलेंगे. Daily answer writing in the class, वो लगभग 4 days a week. The moment you enter the class, there will be some question written, you have to write the answer, and then class will start. Mini test after every week. 4-5 क्वेश्चन का छोटा छोटा टेस्ट आपको दिया जाएगा. 4 सेक्शनल टेस्ट्स, 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट्स, पेपर 1 पेपर. पर्सनलाइज डाउट लिंक तो वो तो होता ही है. पर्सनलाइज इंटरव्यू मेंटरशिप ऑब्वियसली मेरे साथ जुड़े हैं तो वैसे भी मिल जाएगा. ठीक है. सो
ये मेरा एक फेवरेट कोट है, एथिक्स में भी मैं कोट करता हूँ और इसमें भी, until philosophers are kings or the kings have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evils. क्या मतलब है? Let us see whether you are able to understand. Very good, very correct. Wherever there is authority, the person in the authority should be as broad, as philosopher-like as possible. Then only he will be able to do justice. Then only he will be able to think broadly, think long-term, think deeply. That's what Plato had said. That is the reason UPSC also wants. ये अगर कल को आपको इंटरव्यू में पूछा जाए आपने फिलोसॉफी क्यों लिया, फिलोसॉफी का क्या फायदा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा. क्रिटिकल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, समवेयर मोर रिलाइंग ऑन एथिकलिटी, क्योंकि आपको पता ही है ना कि यही चीज है. मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करके एक होता है कि चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो योर इंटेलेक्चुअल रिगर, योर स्टैमिना टू सस्टेन इंटेलेक्चुअल दिस थिंग इज मोर, कि चलो कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स थिंक, लेट्स पुट लॉजिक, सो इट हेल्प्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव सम क्वेश्चंस you can ask, otherwise let's meet on Monday 29 July. वही 11 to 1:30 is our class timing. Monday class would also be online, I think YouTube live, introduction to Indian philosophy. उसके बाद मोस्टली नहीं होगा. These two classes are just for reference to the students की जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ डाउट्स है तो यू कैन गिव डाउट्स. एंड दोज हु कॉन्टैक्ट मी अदरवाइज, you can contact me on this number. Try to contact through WhatsApp message possibly or SMS, so that we can take forward. So any question? ये वाली, हाँ, ये स्लाइड आपको क्यों चाहिए? मिल तो जाएगी बिल्कुल, उसमें क्या है. आप एक बार WhatsApp पे, यू हैव माय नंबर, यू आस्क, आई विल फॉरवर्ड इट. उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा. ठीक है, देन shall we call it a day, or at least not day but at least call it a lecture now. Okay, so thank you very much. Hope to see you on Monday 11 a.m. Okay, thank you.